ALS had already been initiated 1 hour before the scheduled time of the power descent start. Following this, the throttleable engine electronics module, the TECM, was switched on and lander was oriented to the favorable attitude. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल जिसकी शुरुआत में वेलोसिटी 1680 मीटर पर सेकंड थी, लगभग 1150 मीटर पर सेकंड हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही मैजेस्टिक शुरुआत कही जा सकती है इस रफ ब्रेकिंग फेज के लिए। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि द लैंडर मॉड्यूल का आल्टीट्यूड धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिख रहा है, और जो कि एक्सपेक्टेड भी है। अभी हम बात करें करंट आल्टीट्यूड की, तो जो कि 28.6 किलोमीटर के आसपास है। आप स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं चंद्रयान 3 लैंडर इमेजर डिस्प्ले. The lander imager is continuously taking photographs of the moon's surface, and that is also being streamed here. Currently, the horizontal velocity has been brought down, and the distance traveled is 574 kilometers. The current altitude is 27 kilometers, as can be seen on the screen. जी हाँ, करीब करीब अपने आधे सफ़र को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में लैंडर बहुत ही आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी ऊंचाई को घटा रहा है। अगर अब बात करें तो लैंडर की ऊंचाई चंद्रमा के सतह से लगभग 27 किलोमीटर से नीचे हो चुकी है, करीब करीब 26.7 किलोमीटर के आसपास है। The next phase after the rough braking phase is the attitude hold phase, which will be for a duration of nearly 10 seconds. The lander will be oriented such that both the altimeters will be looking exactly towards the moon's surface. At the end of this attitude hold phase, height measurement update to navigation system will be given from the laser and car band altimeters. Currently, we are in the middle of the rough braking phase. जी हाँ, अगर हम ध्यान से देखें तो लगभग 8 मिनट की यात्रा के बाद लैंडर अपनी हॉरिजेंटल वेलोसिटी को लगातार कम करते हुए अपनी ऊंचाई, अभी की ऊंचाई के समय 24 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। अब तक के आंकड़े को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लैंडिंग पूरी तरह से नॉमिनल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगातार कम होती हुई दिख रही है। The altitude of lander from ground is currently 12 kilometer, is currently 22 kilometer, which is again going to be coming down, and that is expected. For the viewers who have joined now, we are in the power descent phase, and we are in the rough braking phase, which is the first phase of the power descent. We have currently traveled a downrange of 697 kilometers, and the downrange that has to be traveled during this phase is 713.5 kilometers. Okay, okay. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगभग 720 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। लगभग हम ये कह सकते हैं कि 900 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी को कम किया जा चुका है। At the same time, we can see the altitude of the lander is just 17.8 kilometer from the moon surface, which is going to be around 7.4 at the end of the rough braking phase. इस फेज के बाद हम जाएंगे towards at the beginning only attitude hold phase, at the beginning only at 5:20 where we will be is he going to expecting join? sensor update from the laser and car band altimeters. Okay. We can see the visualization of the lander module.
moving Okay. towards the moon's surface. The current altitude is nearly 15.2 kilometers and the distance traveled is 754 kilometers. We can also see the image that the lander imager camera has been providing. जी हाँ, इस रफ ब्रेकिंग फेज के दौरान 800 न्यूटन के चारों थ्रोटल इंजन अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम कर रहे हैं। अब तक लैंडर लगभग अपने 75 से 80% की यात्रा को पूरा कर चुका है। After the rough braking and the attitude hold phase, we shall be having the fine braking phase, which will continue for nearly 3 minutes. The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer and there is no intervention from ground. जी हाँ आरुषि, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं कि जो करंट आल्टीट्यूड है चंद्रमा के सतह से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। जी हाँ, हम अपने जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जोहानसबर्ग से जुड़ गए हैं। Yes, we are privileged to have with us Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who has joined us from South Africa's Johannesburg to encourage us. जी हाँ, आप ये देख सकते हैं एल्टीट्यूड होल्ड फेस भी बहुत ही आसानी से लैंडर फेस ने पार कर लिया है और अब फाइन ब्रेकिंग की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 5.6 किलोमीटर है, जो कि इस फेज के उपरांत लगभग 800 मीटर हो जाएगी। We can hear from the mission operations team that the sensors are performing nominally and we are currently in the midst of the fine braking phase, which is going to continue for 3 minutes and the altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase. जी हाँ, जैसा कि आरुषि जी ने बताया कि लगभग 3 मिनट के उपरांत लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगी और यहाँ पे लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इवन डाउन रेंज भी लगभग शून्य होगा। We can see the visual of the lander module and we can see that the downrange traveled is nearly 831 kilometers. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा के सतह से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है। We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers as we can see. ठीक, ठीक, ओके, 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 थैंक यू। So it will go both Hindi as well as English. Then only you will start the video. Hindi as well as English. Then only you will start the video. Okay, okay, thank you. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। We are nearing the final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent phase.
or the local navigation phase. जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव्स के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। Lot of applause indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced. And the lander module has begun its descent towards the landing site. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above जी the हाँ, lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं, जो कि सेकेंड हाइब्रिड फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let लैंडर us all मॉड्यूल wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है।
अगर ये मैं हम सही लोगों के मायने में लिए कहूँ तो बहुत ही घूमने गर्व का की इलाज बात है। है। कोई भी अगर मैं हिंदी में सही एक मायने में कहावत कहूँ है तो किसी भी कि देश में चंदा मामा शासन दूर कोई के, भी मिशन हो लेकिन अब हम ये और कह चाहे सकते किसी हैं भी देश कि के चंदा मामा और अपने घर के। अनिश्चितता के बीच बहुत ही महीन बहुत ही होता उम्दा. है The और hard work अनिश्चितता of के the बीच entire बहुत ही ISRO महीन अंतर community होता है। has come to fruition. लेकिन सफल ना हम थके ना हम हारे, लेकिन उनकी कमियों के आधार हुए आज पूरी तरह से आश्वस्त किया करके सुधारते हुए मॉड्यूल पूरी तरह से तौर पे चंद्रमा की सतह पर लैंड सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग तौर पे चंद्रमा की सतह पर सभी दर्शकों के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अब हम इसरो के नमस्कार। सभी जानकारी के लिए Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. चंद्रयान 1 अक्टूबर 2008 में Sir, के द्वारा सफलतापूर्वक 2008 में किया गया। पीएसएलवी रॉकेट के द्वारा I request चंद्रमा की सतह पर I request our honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. यही कारण है कि पहले ही विश्व के तमाम अंतरिक्ष कारण है कि और स्पेस एजेंसियां विश्व के तमाम मेरे प्यारे परिवारजनों, एजेंसियां चंद्रमा को और करीब से जानने जब हम अपनी आंखों के सामने चंद्रयान जुलाई 2019 जो इसरो का दूसरा मून मिशन है इतिहास जुलाई बनते हुए 2019 देखते हैं, इसरो के सबसे ताकतवर रॉकेट एलवीएम 3 द्वारा लगभग 4 साल बाद यह चंद्रमा के 100 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में चंद्रमा के 100 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हुए बहुत के प्रारंभ में इसका डेटा निर्धारित की गई थी। प्रारंभ में एलवीएम 3 द्वारा 1 साल निर्धारित की गई मिशन, परंतु एलवीएम 3 की वजह से चंद्रयान 2 काफी लंबे समय तक कार्य की वजह से चंद्रयान 2 लंबे समय चंद्रमा के लगभग सभी भागों का चित्रण चंद्रयान 2 इस चंद्रमा के लगभग सभी भागों का चित्रण करता है। महत्वपूर्ण लोचन कैमरा विश्व का कैमरा है, हाई रिजोल्यूशन जो कि चंद्रमा का सतह का है, जो कि चंद्रमा के नया का निवेदन करूंगा कि वो आप मुश्किलों के महासागर को पार करने का वर्तमान में चंद्रयान के इसरो के अभी जीत के चंद्र पथ पर चलने का विवरण। अब चलते हैं ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे इस महाअभियान से जुड़ने के लिए नमस्कार, आप सादर आमंत्रित इस महाअभियान से हमारे वैज्ञानिक साथियों ने मैं कहा, सादर आमंत्रित हूं। इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आरुषि सेठ के साथ आप आज सभी हम होस्ट श्रीमती आरुषि से जुड़े सभी दर्शकों आप में सभी को हार्दिक अभिनंदन देश विदेश नए से जुड़े सभी भारत दर्शकों की का नई उड़ान हार्दिक के अभिनंदन 2023 स्वागत साक्षी आज बने। की शाम इसरो के साथियों, वैज्ञानिकों और सभी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के समय साथ इसरो के वैज्ञानिक मॉड्यूल और ब्रिक्स सभी चंद्रमा के समिट में वैज्ञानिकों के साथ हिस्सा लैंडर लेने मॉड्यूलों के को लिए चंद्रमा के सतह पर तैयार और दक्षिण अफ्रीका में ऐतिहासिक पलों को देखने के लिए इसरो के तैयार। गौरवपूर्ण इतिहास में एक और हर अध्याय जुड़ने जा रहा है। देशवासी इसरो की के तरह गौरवपूर्ण इतिहास में और आज हम ये इस और मन अध्याय जुड़ने जा रहे बनेंगे चंद्रयान और आज हम सब महाअभियान लोग आप पर ये भी सारे विजुअल्स लगा अपनी हुआ। स्क्रीन पर इसरो के मिशन ऑपरेशन ये सारे विजुअल्स नया अपनी मॉनिटर इतिहास देख रहे हैं। बनते इसरो ही के मिशन ऑपरेशन की बेंगलुरु में हर टेलीमेट्री भारतीय ट्रैकिंग एंड कमांड जो नेटवर्क कि की बेंगलुरु बेंगलुरु में में डूब गया। टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क हर घर में आपको पावर डिसेंट के काउंटडाउन उत्सव शुरू हो और गया। इस पथ को प्रदर्शित कर रहा है पावर डिसेंट चल कर लैंडर और चंद्रमा के साउथ कर रहा है जिससे चलकर लैंडर लैंडिंग आज चंद्रमा के साउथ पोल पे आपको ध्यान दिला और सॉफ्ट लैंडिंग इस समय हम लोग अपने पावर डिसेंट शुरू होने से परिवारजनों के लगभग इस समय हम लोग पावर डिसेंट शुरू होने से वो दर्शक लगभग 22 मिनट थोड़ी देर से जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें आप थोड़ी देर से जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें ऑफिशियल वेबसाइट ऐतिहासिक पल को ट्विटर इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट सकते हैं फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब पे भी देख सकते हैं बहुत Honorable बहुत बधाई dignitaries, देता हूँ। delegates,
scientists, जिन्होंने honorable media इस personnel, पल के लिए delegates, and dear viewers, scientists, a very good media evening to personnel, all of you. इतना and dear परिश्रम viewers, We किया, at ISRO a very good welcome evening you to all to of the you. live coverage We of at India's ISRO's prestigious welcome you to the आनंद Chandrayaan live 3 coverage missions of और of landing India's भावुकता on the से lunar भरे surface. Chandrayaan 3 missions These are the landing visuals events पल on the के lunar लिए mission operation complex मैं एक at These are the ISRO's visuals telemetry from tracking mission and operation command complex network is at tracked, ISRO's situated situated in in Namma command Bengaluru, network Karnataka. बधाइयाँ देता हूँ। situated I, in Arushi Namma Seth, Bengaluru, and my Karnataka. colleague, Dr. Padamdeo Mishra, Arushi Seth, are your and my hosts for the colleague, evening. Dr. And shall Padamdeo Mishra, accompany you are on your the journey hosts for for the the landing evening, event and shall from accompany power you descent start on the to journey touchdown of the landing event from Chandrayaan power Today we descent shall be start witnessing to touchdown. the final phase of the Today we critical shall be and most witnessing technologically final challenging phase mission of the operations critical and most Chandrayaan 3, technologically wherein the challenging lander mission module operations will be of making a Chandrayaan safe 3 and soft wherein the landing lander on the module surface will be of the making moon. a अब safe आज के and बाद soft से landing These display on the screens surface of the show the moon. countdown चांद to से the power जुड़े descent These start, display as screens well as the show the path that countdown will be to the followed power by the descent lander start, module, as well as the path कथा that we will are be 18 followed by minutes the lander away module. from the commencement of और power We are नई descent. 18 पीढ़ी के minutes लिए away from the India is at the commencement brink of of power creating descent. history जाएगी As we all India await is with at the bated brink of breath creating to history, witness भारत में the तो as we landing all on await Moon's with south bated polar breath सभी region. to लोग witness the landing on धरती Moon's को south polar region. माँ कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। इसरो का पहला मून मिशन चंद्रयान 1 Friends, अक्टूबर इसरो का पहला मून मिशन on this चंद्रयान 1 joyous अक्टूबर occasion, 2008 में पीएसएल I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful धन्यवाद moon आरुषि। mission अगर मैं सही मायने में कहूँ तो not धन्यवाद just आरुषि India's का कोई alone, भी मिशन मैं हो सही और मायने चाहे में कहूँ किसी तो भी देश के द्वारा अंतरिक्ष संचालित का किया जा रहा हो और चाहे इसरो किसी भी की देश के मिशन द्वारा की संचालित किया जा रहा और हो अनिश्चितता के बीच बहुत मिशन ही के महीन इंडिया अंतर होता है और G20 अनिश्चितता के बीच जिससे कि एक बहुत ही सफल महीन या अंतर असफल होता है approach of जिससे कि एक लेकिन मिशन ना हम सफल या असफल होता ना हम हारे one हम family, लेकिन ना हम पिछली कमियों को one सुधारते family, हुए आज पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि सुधारते लैंडर मॉड्यूल आज पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि सतह पर लैंडर मॉड्यूल निश्चित तौर से चंद्रमा के सतह पर सभी दर्शकों के जानकारी के लिए अब हम इसरो के सभी दर्शकों के जानकारी के लिए अब हम इसरो के प्रस्तुत करेंगे अब तक के सभी लूनर मिशन जी हाँ संक्षिप्त विवरण इसरो का पहला मून मिशन चंद्रयान 1 जी हाँ अक्टूबर 2008 का पहला मून रॉकेट चंद्रयान 1 सफलतापूर्वक अक्टूबर 2008 में पीएसएलवी रॉकेट के द्वारा चंद्रयान 1 ने चंद्रमा के सतह पर पानी की खोज चंद्रयान 1 ने चंद्रमा के सतह पर पानी की कारण है कि पहले ही इतिहास विश्व के तमाम अंतरिक्ष वैज्ञानिक कारण है कि और स्पेस एजेंसियां विश्व के तमाम अंतरिक्ष वैज्ञानिक और करीब से जानने से एजेंसियां दिख रही हैं चंद्रमा को और करीब से जानने बात करें चंद्रयान 2 दिख रही हैं जो इसरो का दूसरा अगर हम बात करें चंद्रयान 2 2019 जो इसरो का दूसरा मिशन ताकतवर रॉकेट जुलाई 2019 में द्वारा सफलता से ताकतवर रॉकेट किया गया था एलवीएम 3 द्वारा और आज भी लगभग 4 साल बाद किया गया था या चंद्रमा और आज भी लगभग 4 साल बाद ऑर्बिट में घूमते हुए या चंद्रमा के 100 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हुए बहुत ही के प्रारंभ क्वालिटी का डेटा की आयु एक साल निर्धारित मिशन के प्रारंभ में परंतु इसकी आयु द्वारा एक साल निर्धारित की गई इंजेक्शन और मिशन मैनेजमेंट की वजह से बहुत ही सटीक इंजेक्शन काफी लंबे मैनेजमेंट की वजह से चंद्रयान 2 काफी लंबे समय तक कार्यरत चंद्रमा के लगभग सभी भागों का चंद्रयान 2 है इसका चंद्रमा के लगभग सभी भागों का पेलोड ले चुका है OH-RC का यानी कि ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा OH-RC का सबसे ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा जो कि चंद्रमा की सतह का लगातार कैमरा भेज रहा है जो कि चंद्रमा की सतह का लगातार करूंगा भेज रहा है वो आप लोग मैं आरोसी वर्तमान मिशन चंद्रयान 3 के बारे में आप लोगों को इसरो के वर्तमान मिशन चंद्रयान 3 के बारे में बताएं अभी आपने मिश्रा जी के द्वारा सुना इसरो के अभी तक के लूनर मिशन जी का द्वारा सुना इसरो के अब तक के लूनर चंद्रयान का विवरण द फॉलो अप मिशन ऑफ चंद्रयान टुवर्ड्स चंद्रयान which has been designed the follow up mission or mission goals which has been the primary objective of Chandrayaan 3 mission is the primary objective of Chandrayaan 3 mission on the demonstration of safe and soft landing is a critical aspect
for ISRO's This future demonstration interplanetary is a missions. critical aspect. In addition to this, the mission objectives also include demonstration of the mission objectives also and conduction demonstration of scientific experiments on moon and conduction of in situ scientific carried on the shoulders of India's heaviest rocket LVM carried on the shoulders of India's heaviest Chandrayaan 3 was placed in the 14th of July parking orbit. Chandrayaan 3 was placed 170 by 36,500 kilometers. 170 by 36,500 kilometers. Following the incremental trajectory approach, in its mission carried of following the incremental trajectory approach, carried a total of 5 earthbound maneuvers, which took place on the 25th of July. Apogee raising maneuver, placed the spacecraft in an orbit 25th of July, 250 placed the spacecraft in an orbit kilometers, of 250 by 1,27,000 kilometers. The translunar injection was carried out, after which the translunar injection was carried out. The final leg of its long journey, the composite module of nearly 3,84,000 kilometers for its rendezvous with the moon. 3,84,000 kilometers. The TLI was its rendezvous with the mission, enabling the TLI was a key step in the mission, gravitational pull, enabling the and travel to the moon to escape Earth's gravitational pull of 288 by 3,69,228 kilometers was achieved at the end of the translunar kilometers was achieved at the end of the translunar जी हाँ, injection. ट्रांसलूनर इंजेक्शन किसी भी इंटरप्लेनेटरी मिशन के लिए बहुत ही आवश्यक, किसी भी इंटरप्लेनेटरी मिशन के लिए बहुत ही सफल मैन्यूवर के बाद कठिन चंद्रयान 3 पृथ्वी से दूर निकल मैन्यूवर के बाद चंद्रयान के प्रभाव क्षेत्र से दूर निकल हाइपरबोलिक ट्रैजेक्टरी चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र पहुंचाया गया। हाइपरबोलिक ट्रैजेक्टरी 5 अगस्त 2023 पहुंचाया गया। लूनर ऑर्बिट 5 अगस्त 2023 चंद्रयान 3 को 160 किलोमीटर के पेरीलून के द्वारा चंद्रयान 1000 किलोमीटर 160 किलोमीटर के पेरीलून चंद्रमा के 18000 किलोमीटर एलिप्टिकल अपोलून के साथ चंद्रमा के एलिप्टिकल के तरह ऑर्बिट में एलओआई भी एक बहुत जटिल ऑपरेशन की तरह एलओआई भी इसमें हमें बहुत जटिल देना आवश्यक होता है कि उपग्रह हमें ध्यान देना आवश्यक होता है कि उसे घटाया जा उपग्रह के वेगमान अन्यथा एक निश्चित चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। उपग्रह चंद्रमा के प्रभाव एलओआई से सफलता बाहर निकल परिचालन के बाद चंद्रयान की सफलता को 4 बार परिचालन के बाद किया गया। चंद्रयान इस दौरान कक्षा को 4 बार और परिवर्तित किया गया। एक दौरान किलोमीटर कर दिया अधिकतम ऊंचाई को घटाकर इस पूरी 160 किलोमीटर मॉड्यूल का लगभग 700 पूरी किलोग्राम में propulsion मॉड्यूल का लगभग 700 और चंद्रयान 3 के वेगमान को ईंधन का लगभग हुआ 800 और चंद्रयान 3 के वेगमान कर दिया गया लगभग 850 लैंडर मॉड्यूल को कम कर लगभग 150 किलोमीटर लैंडर मॉड्यूल ऑर्बिट में लगभग करने के बाद 50 किलोमीटर के 17 अगस्त 2023 को करने के बाद propulsion मॉड्यूल से 17 अगस्त 2023 को पुनः लैंडर मॉड्यूल के अलग कर दिया गया। दो द्विध्रुव पुनः लैंडर मॉड्यूल के ऑर्बिट को 50 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट द्वारा घटाकर 50 किलोमीटर गुणे 130 सर्कुलर ऑर्बिट से घटाकर एलिप्टिकल ऑर्बिट 25 गुणे 130 किलोमीटर के इस दौरान ऑर्बिट में यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि 800 न्यूटन के चारों थ्रटल कर दिया गया कि पावर डिसेंट के समय किसी भी चारों थ्रटल का सामना कर सके। पावर डिसेंट के लैंडर मॉड्यूल चुनौती का सामना कर सके। 4 दिन तक चंद्रमा लैंडर परिक्रमा करता रहा ऑर्बिट में 4 दिन तक सभी चंद्रमा की परिक्रमा करता रहा। पावर डिसेंट से पहले कार्यात्मक के सभी सब वेरीफाई और वैलिडेट किया जा सके। पहले कार्यात्मक रूप से वेरीफाई इस दौरान चंद्रयान 2 और लैंडर मॉड्यूल की आपस में बातचीत भी चंद्रयान 2 और लैंडर मॉड्यूल की आपस में बातचीत भी हो चुकी है। तो लैंडर मॉड्यूल अब तक यात्रा की बात करें और लगभग लैंडर मॉड्यूल अब बार चंद्रमा का चक्कर लगा चुका है और लगभग 100 पूरी यात्रा में लगभग 55 लाख किलोमीटर की यात्रा भी और इस पूरी यात्रा में लगभग 55 लाख किलोमीटर की पूरे अभियान में यह भी सुनिश्चित किया गया अब तक के सारे पूरे अभियान में यह भी सुनिश्चित किया गया कि लैंडिंग सारे ऑर्बिट मैन्यूअर्स इस पावर डिसेंट की शुरुआत से ही लैंडर के ऑर्बिटल प्लेन में बना रहे। पावर डिसेंट की शुरुआत से ही लैंडर के ऑर्बिटल प्लेन में बना रहे। It further complicates. We have arrived at the crucial juncture wherein the orbit plane contains the desired landing site wherein the orbit plane contains the desired landing site. We are also happy to announce that live images from the Chandrayaan 3 lander imager camera live images from the Chandrayaan 3 lander imager camera. The demonstration of soft landing on the moon's surface is the demonstration of soft landing on the moon's surface. Challenges and complexities involved due to the innumerable challenges and
complexities involved. From nearly 6,048 kilometers per hour, from without any aid from the thin and tenuous moon's atmosphere, without any aid from the lunar dust at the time of atmosphere, and the craters and lunar dust at the time of landing surface, and the craters and further complicated scattered over the moon's surface, make it further complicated Chandrayaan 3 design has been built after the new and improved Chandrayaan 3 scenarios has been built after can encounter all the scenarios with several software module can encounter provision for full level redundancy, several software improvements, a plethora of special tests for full level redundancy, the integrated hot test, special integrated cold test, and lander leg drop tests were carried out for the lander module, and lander leg drop tests were carried out for the lander module. Provided great confidence in the performance tests of all the provided great confidence propulsion system of and associated guidance control, propulsion navigation algorithms, and associated guidance control and navigation algorithms have enabled to improve the overall system performance, have enabled to improve the overall system performance. The moon has been chosen as the intended south pole of the moon, since there is a possibility as the intended landing site and other minerals, there is a possibility vital resources for future other minerals, which would be vital resources for continuing investigations pioneered by Chandrayaan 1 and Chandrayaan investigations. The Chandrayaan 3 by Chandrayaan will also provide invaluable data to the science community will also provide the world. Invaluable data. Let us give our viewers community around the world configuration. Let us give our viewers a glimpse on the configuration of Chandrayaan 3 mission. And support team across ISRO and other places, other institutions. And Shankaran has been the lead of the center which integrated all of these efforts in the last so many years. So I request him to speak on behalf of all of you. चंद्रयान 3 का मिशन प्लान लगभग चंद्रयान 3 का मिशन प्लान लगभग यह भी सुनिश्चित किया गया है कि बनाया गया है चंद्रयान 3 यहाँ यह भी रॉकेट किया गया है से लेकर के चंद्रयान चंद्रमा के निकट रॉकेट से अलग होने से लेकर के सारी चंद्रमा के निकट चंद्रयान 2 के अंदर स्थापित होने तक और सारी हम यह कह सकते हैं कि यह प्लान पूरी तरह से सब हम यह कह सकते हैं कि यह प्लान पूरी तरह से मॉड्यूल के सेंसर और propulsion सिस्टम को लैंडर इस तरह से मजबूत किया गया है कि propulsion लैंडर पावर डिसेंट तरह से मजबूत किया गया है आपदा से बाहर लैंडर पावर डिसेंट के मुख्य किसी भी आपदा से बाहर आकर के इस क्रम में के मुख्य लैंडर के मुख्य सेंसर्स कारा इस क्रम में नासा लैंडर के मुख्य सेंसर एलडीवी कारा और एलएच डासा कार्यात्मक परीक्षण भी किया जा चुका है और एलएच डैक का कार्यात्मक जो कि पूर्णतः स्वदेशी तकनीकी से बनाया गया एलडीवी जो कि पूर्णतः स्वदेशी मुख्य कार्य बनाया गया लैंडर के वेलोसिटी है तीनों इसका मुख्य कार्य करना लैंडर के वेलोसिटी पावर डिसेंट के दौरान लैंडर के सटीक पोजीशन पावर और वेलोसिटी के दौरान ज्ञान होना लैंडर की सटीक पोजीशन और वेलोसिटी का ज्ञान लेजर इनर्शियल आवरेंसिंग एंड एक्सीलरोमीटर पैक यानी लेजर इस कार्य को पावर डिसेंट एंड एक्सीलरोमीटर भी निभाएगा इस कार्य को पावर डिसेंट के दौरान ट्रैजेक्टरी जनरेशन निभाएगा जो कि चंद्रयान 3 मिशन के लिए बहुत ट्रैजेक्टरी जनरेशन जो कि चंद्रयान आर्बिट मिशन के लिए बहुत ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर आर्बिट मैन्यूवर के बाद होना यह सुनिश्चित किया जाता है इस क्रम में मैं यह भी आपको बता दूं कि ऑर्बिट डिटरमिनेशन इस क्रम में जो कि मैं यह भी आपको बता दूं और ऑर्बिट डिटरमिनेशन बहुत ही एक्यूरेटली बताता है और बहुत ही कठिन बहुत जटिल क्रूटली बताता है और एस्टिमेशन बहुत ही कठिन और जटिल यहाँ यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि चंद्रयान 2 का यह भी जानना महत्वपूर्ण है OH-4C पेलोड चंद्रयान 2 का काफी ऊंचे स्तर का OH-4C पेलोड जिसके फलस्वरूप काफी लैंडिंग साइट की सीमा को बढ़ाकर जिसके 4×2.4 किलोमीटर सीमा को बढ़ाकर 4×2.4 किलोमीटर लैंडिंग कराने में काफी पावर डिसेंट के दौरान सॉफ्ट लैंडिंग कराने में काफी सहायक सिद्ध होगा Apart from the sensors, Chandrayaan 3 is equipped with the suite of sophisticated Chandrayaan 3 is equipped with the suite while Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 orbiter have provided while Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 orbiter have provided equally important remote sensing on-site localized measurements equally important ground are the on-site localized measurements lander and rover have payloads which are completely new lander and rover have payloads analysis of lunar surface and will perform the two spectroscopes on rover lunar surface APXs and LIBS the two spectroscopes
actively measure the surface elemental abundances will actively measure the surface elemental abundances at the landing location. The lander carries and surrounding area ILSA that can sense impact events and lunar ILSA that can sense impact events and lunar will measure the temperature profile and thermal conductivity of will measure the temperature profile and thermal conductivity. The Rambha payload will carry out lunar ionosphere studies. The Rambha payload will carry out lunar ionosphere studies passive while the laser retroreflector array shall be a passive location altimeter for future space. The propulsion module has not been left behind, and the propulsion experiment has not been left behind added and to it as a value addition. Shape payload has been added in understanding the nature and characteristics of water-rich understanding the nature and characteristics the future study of potentially habitable exoplanets. In the future study of potentially habitable exoplanets. Striving to reach a goal. We are minutes away from the start of powered descent. We are minutes away. The entire powered descent shall be carried out by the onboard autonomous landing sequencer shall be carried out or ALS onboard autonomous series of instructions or ALS the lander module. A series of instructions. These instructions preloaded to the lander module executed. These data to be collected, the commands and executed, and decisions to be made and executed and analyzed throughout the powered descent. To be made and executed autonomously throughout the powered descent. Nothing can go wrong, and this is going to be जी हाँ, successful. अब हम पावर डिसेंट के बहुत ही करीब आ चुके हैं। जी हाँ, अब हम पावर बताते चले कि पावर डिसेंट को कुल 4 चरणों में बांटा गया है। पावर डिसेंट सबसे पहले आता है 4 चरणों में बांटा गया है, जिसमें लैंडर पहले आता है चंद्रमा की सतह से 30, जिसमें लैंडर से ऊंचाई को 7.4 किलोमीटर से घटाकर इस पूरी 7.4 किलोमीटर में कर दिया जाए। लगभग इस 11.5 मिनट पूरा करने में और इसका लगभग समानांतर 11.5 मिनट 1680 और मीटर समानांतर मिलाकर 1680 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 358। We have continuous flow of lander telemetry data from we have continuous flow of lander telemetry data from is located in Belalu, Bengaluru. IDSN 32 the data is located in Belalu, Bengaluru station and is the data is being acquired real time by communication and is flown to the mission operation complex. We also have communication from ESA and in addition to it we also have support from ESA. There will be no ground intervention once the ALS takes charge. There will be no ground intervention. Preparation for today's event has started 48 hours before. The preparation for today's event has started 48 hours parameters for the autonomous landing sequence were carried parameters for the autonomous landing sequence were carried out. The whole descent is divided into 4 phases. The rough breaking descent is divided into the attitude hold phase, the rough breaking phase, and the local navigation hold phase, the terminal descent phase, and the local navigation phase or the terminal descent phase. I want to tell you, and I want to thank you also for जी हाँ, each and everyone एटीट्यूड who होल्ड prayed with फेज us जो कि in पावर the last डिसेंट का many days. दूसरा चरण है। एटीट्यूड होल्ड बहुत ही महत्वपूर्ण पावर डिसेंट का दूसरा चरण है। 10 सेकंड के बहुत ही स्मॉल ड्यूरेशन के दौरान इस लैंडर के 2 महत्वपूर्ण स्मॉल ड्यूरेशन के दौरान और लैंडर के 2 महत्वपूर्ण ऊंचाई की गणना करें। कारा और लासा के पूरा लैंडर की ऊंचाई की लैंडर चंद्रमा के सतह से फेज 6.8 किलोमीटर लैंडर चंद्रमा के सतह से कुल 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। During the rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1,600 lander velocity shall be brought down to from 1,680 meters per altitude will be brought down from 30 kilometers. The altitude will be brought down at the end of rough kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. Get the reviews done to ensure that nothing goes with any mistakes. Currently, And of course, this is not the work of us alone. we can see This is the work currently of the a scientists generation are of analyzing the leadership lander and data. We can see scientists. the scientists are analyzing the lander data. Continued in Chandrayaan 2 and जी Chandrayaan हाँ, 2 हम ये craft is देख still सकते working हैं and कि doing मिशन lot of ऑपरेशन communication जी हाँ, with हम us. ये देख सकते हैं बैठे बैठे सभी सभी वैज्ञानिक वैज्ञानिक ऑपरेशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स जो भी डेटा बैठे सभी वैज्ञानिक वो जो भी डेटा डीप स्पेस देख रहे हैं आईडीएसएन वो 32 के द्वारा इसने प्रोवाइड किया जा रहा है 32 और अगर के द्वारा बात करें प्रोवाइड किया जा रहा है तीसरे चरण का और अगर हम बात करें पावर डिसेंट जिसमें लैंड चरण का लैंडिंग साइड से जस्ट होगा 800 मीटर में लैंडर पर लैंडिंग होगा जस्ट 8 चरण को ऊंचाई पूरा होने में वर्टिकली होगा 3 मिनट लगेंगे इस चरण को और इस पूरा होने में होते लगभग 3 मिनट लगेंगे वेलोसिटी और इस लगभग पूरा होते ही शून्य हो जाएगा लैंडर की वेलोसिटी
लगभग The शून्य हो scientists here जाएगी। at his track are glued to their systems, The scientists analyzing here all at his sorts of track are complex glued to data. their systems, analyzing all sorts of complex data. We are very close to the powered descent. We are To the very start of the close powered descent to the phase. powered descent, to the start of the powered descent phase. जी हाँ, अगर हम अब बात करें पावर डिसेंट के चौथे और अंतिम चरण का, अगर हम अब बात जो करें कि पावर लोकल डिसेंट के नेविगेशन चौथे फेज और या अंतिम चरण टर्मिनल का, डिसेंट फेज जो भी कहा कि जाता लोकल है, नेविगेशन इस फेज दौरान या टर्मिनल लैंडर डिसेंट के फेज दो भी कहा इंजन जाता बंद कर है। दिए जाएंगे। इस दौरान और लैंडर के दो इंजन बंद कर दिए जाएंगे और वेलोसिटी की और गणना लैंडर के सेंसरों द्वारा इनर्शियल इसके नेविगेशन हाइट को भेज दिया और जाएगा। वेलोसिटी की गणना इस दौरान इनर्शियल नेविगेशन को लैंडर भेज दिया 150 जाएगा। मीटर की ऊंचाई को इस दौरान प्राप्त करने के लैंडर बाद 150 मीटर की ऊंचाई को कुल प्राप्त 131 करने के सेकंड बाद लगाएगा। इस पड़ाव पे कुल आने के बाद 131 लैंडर सेकंड 22 लगाएगा। सेकंड के लिए इस पड़ाव पे hovering आने के करेगा। बाद पुनः लैंडर 22 सेकंड के लिए हवरिंग करेगा। आप इस समय अपने स्क्रीन पे मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में इस समय अपने स्क्रीन पे मिशन ऑपरेशन सभी मान्य गणों को देख सकते हैं बैठे, जो कि बहुत ही सभी मान्य गणों के देख सकते हैं। टेलीमेट्री डेटा को उत्सुकता के साथ अभी हम लोग पावर डिसेंट देख रहे हैं। अभी हम लोग कुछ ही पल दूर हैं, शुरू होने से जस्ट कुछ ही पल दूर हैं। पावर डिसेंट शुरू होने में लगभग पावर डिसेंट शुरू बचा है। लगभग हमको 30 सेकंड ही बचा है मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स रूम में। हमको ये सारे डेटा मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स जो कि लगातार लैंडर आईडीएसन 30 में बना हुआ है द्वारा प्रदान लगातार लैंडर के कनेक्शन में बना हुआ है, प्रदान कर रहा है। Dear viewers, the pivotal power descent has begun. And the lander module is propelling towards the moon's surface, and the lander along the intended trajectory. Towards the moon's surface along the intended trajectory. जी हाँ, अब हम देख सकते हैं रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत। हम अब देख सकते हैं रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत हो चुकी है। During this rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1,680 meters per second to 358 meters per second to 358 meters per second. From 30 kilometers, the altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of 690 seconds or 11.5 duration of 690 seconds. The laser inertial reference and accelerometer package. Currently, the laser inertial reference and accelerometer package (LIRAP) is aiding in the अभी आप navigation. अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जी हाँ, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं 191 किलोमीटर लैंडर हॉरिजेंटल दिशा में चल चुका है। 191 किलोमीटर हॉरिजेंटल दिशा में चल चुका है। वेलोसिटी लगभग 31 किलोमीटर अभी तक इसकी वेलोसिटी लगभग 31 किलोमीटर बनी हुई है। The lander module has traveled a distance of approximately 228 kilometers. Approximately 228 downrange that will be traveled during this phase shall be nearly 713.5 kilometers. Shall be nearly 713.5 kilometers. जी हाँ, कुल 745 किलोमीटर के इस रफ ब्रेकिंग फेज में 745 किलोमीटर के इस हम लोग लगभग अपनी यात्रा 20% हम लोग लगभग कर चुके हैं। अपनी यात्रा 20% कंप्लीट कर चुके हैं। The other thing that I have to announce is each presenter is going to get 3 minutes. पावर डिसेंट की यह शुरुआत हम कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक पावर डिसेंट और सदी हुई शुरुआत हम कह सकते हैं लैंडर बहुत ही सटीक अपने बेगमान हुई है को अनुमानित जिसमें लैंडर घटा रहा है अपने बेगमान को अनुमानित तरीके से घटा रहा है। The topmost right corner of your screen. The altitude of the lander module will reduce from 7.4 kilometers to 6.8 kilometers. From 7.4 kilometers during the next phase, which is going to be during the next phase, which is going to be
We can currently see that the altitude of the lander module is nearly 31 kilometers. The altitude of the lander module is nearly 31 आरुषि kilometers. अभी हम इस ग्राउंड रेस को देखते हुए कह सकते हैं कि रफ ब्रेकिंग ग्राउंड रेस को देखते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत देख सकती हैं बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोजेक्टेड ग्राउंड रेस ये देख सकती हैं उसी पे अपना लैंडर प्रोजेक्टेड ग्राउंड आगे चलते हुए उसी पे अपना लैंडर मॉड्यूल अभी तक आगे चलते हुए देखा जा सकता है कि लैंडर मॉड्यूल लगभग देखा जा सकता है 370 कि लैंडर मॉड्यूल 36 दिशा में चल चुका है 370 किलोमीटर 36 दिशा में चल चुका है The mission operations team is analyzing the data. The mission operations team is analyzing the data. We can all see the seriousness and the concentration with which each and every parameter of the lander module is being analyzed. Each and every parameter of the lander module is being analyzed. The performance so far seems to be nominal. The performance so far seems to be nominal. चूंकि एएलएस एक्टिवेट किया जा चुका है इसलिए ग्राउंड से कोई कमांडिंग नहीं की जा रही है चुका है इस दौरान ग्राउंड से कोई कमांडिंग नहीं की जा रही है इसरो के इस दौरान आपके स्क्रीन पे रियल टाइम में आ रहा है इसरो के डीप स्पेस में से रियल टाइम में थर्ड ऑर्डर गाइडेंस पॉलिनोमियल का प्रयोग हुआ है सेकंड और थर्ड ऑर्डर इनर्शियल गाइडेंस पॉलिनोमियल का प्रयोग हुआ है हमेशा सुनिश्चित जो कि इनर्शियल थ्रस्ट और एंगल के हमेशा सुनिश्चित करेगा During the entire descent, there is no ground intervention. During the entire ALS has taken charge. No ground intervention. The preparation for today's event has started nearly 48 hours before. For today's event has started nearly 48 hours of parameters, wherein various pre-selections. We can see that the vertical velocity of we can see that the vertical has been brought down of the lander module coming down has been brought down. It is continuously coming down. And the ALS had already been initiated 1 hour before the scheduled time of the power descent started. 1 hour before the scheduled time of the power descent started. Engine electronics module. Following this, the throttleable engine and lander was oriented module. The favorable attitude and lander was oriented to the favorable attitude. देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल आप अपनी शुरुआत पे देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल जिसकी शुरुआत में लगभग 1150 मीटर पर लगभग जो 1150 बहुत ही मैजेस्टिक शुरुआत कही जा सकती है जो कि ब्रेकिंग एक बहुत ही मैजेस्टिक शुरुआत कही जा सकती है इस रफ ब्रेकिंग फेज के लिए यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूं कि आप अपने स्क्रीन यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूं कि आप लैंडर मॉड्यूल का आल्टीट्यूड धीरे धीरे अब कम होता हुआ लैंडर मॉड्यूल का जो कि धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिख रहा है और करंट आल्टीट्यूड भी है तो जो कि 28.6 किलोमीटर करंट आल्टीट्यूड है तो जो कि 28.6 किलोमीटर के आसपास है Chandrayaan 3 lander imager display है the lander imager continuously giving the lander imager is photographs of the moon surface and that is also being streamed here. Photographs of the moon surface. Currently the horizontal velocity streamed here. Currently the horizontal velocity and the distance traveled has been brought 574 kilometers. The distance traveled is the current altitude 577 kilometers as can be the current altitude on the screen is 27 kilometers as can be seen on the screen. करीब अपने आधे सफर को पूरा करते हुए करीब ब्रेकिंग फेज में अपने आधे सफर को आगे की तरफ बढ़ते हुए ब्रेकिंग अपनी ऊंचाई को घटा रहा है आगे की तरफ अगर बात करें अपनी ऊंचाई की घटा रहा है चंद्रमा के सतह से करें लगभग लैंडर की ऊंचाई नीचे चंद्रमा के सतह से करीब लगभग 27 किलोमीटर से नीचे हो चुकी है करीब 26.7 किलोमीटर के आसपास है The next phase after the rough braking phase is the attitude hold phase. After the rough braking phase for a duration of nearly 10 seconds, which will the lander will be oriented of nearly 10 such seconds. That both the altimeters will be looking exactly towards the moon surface. Both the altimeters will be looking exactly towards the moon surface. Height measurement update to navigation system will be given from the laser and update to navigation system will be given. Currently we are in the middle of the rough braking phase. Currently we are in the middle of the rough braking phase. अगर हम ध्यान से देखें तो लगभग जी हाँ अगर 8 मिनट की यात्रा ध्यान से देखें तो लगभग लैंडर 8 मिनट की यात्रा के बाद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम करते हुए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को अभी लगातार कम कर 24 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है ऊंचाई के समय 24 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है
अब तक के आंकड़े को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लैंडिंग अब तक के आंकड़े को देखते हुए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम देख सकते पूरी तरह से नामिनल है। हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगातार हैं कम होती हुई दिख रही है। हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगातार कम होती हुई दिख रही है। And when we go through this impressive presentation, we will really realize that private sector has come of The age, altitude of lander from ground is currently 12 km. The altitude of lander is currently 22 km, which is again going currently 22 km, and that is again going to be coming down, and that For and the that is viewers who expected. have joined now, we are in the power descent phase, and we are in the rough braking phase, which is the first phase of the power descent. We are in the rough braking phase. We have currently traveled a downrange of 697 we have currently traveled a downrange of 697 kilometers. The downrange that has to be traveled during this phase is 713.5 that has to be traveled during this phase is 713.5 kilometers. कि लैंडर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगभग 700 कि लैंडर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगभग 700 लगभग 20 मीटर में कह सकते हैं कि 900 मीटर पर सेकंड हमें कह सकते वेलोसिटी को कम किया जा चुका है। मीटर पर सेकंड वेलोसिटी को कम किया जा चुका है। At the same time, we can see the altitude of the lander is just at the same time we can see the altitude of the lander is just 17 moon surface 17.8 which is going to be from the around 7.4 at the end of which is going to be braking phase around 7.4 at the end of the rough braking phase. इस फेज के बाद हम जाएंगे टुवर्ड्स फेज के बाद एटीट्यूड होल्ड फेज टुवर्ड्स द attitude we will be expecting sensor update from the laser where we will be expecting sensor update from the laser and car band altimeters. We can see the visualization of the lander module. We can see the visualization of the lander module surface. The current altitude is nearly 15.2 kilometers. The current altitude is traveled is 702 kilometers. And the distance traveled is 750 that the lander imager camera has been providing. That the lander imager camera has been providing. ब्रेकिंग फेज के दौरान 800 न्यूटन के चारों थ्रोटल इंजन के दौरान कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं। अपने कार्य को पूरी तरह लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम कर रहे हैं। लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम कर रहे हैं। अब तक लैंडर लगभग 75 से 80% की यात्रा को पूरा कर चुका है। 75 से 80% की यात्रा को पूरा कर चुका है। After the rough braking and the attitude hold phase, we shall be having the fine braking and the attitude hold will continue for nearly having the fine braking phase, which will continue for nearly 3 minutes. The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer. The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer, and there is no intervention from ground. जी हाँ आरुषि, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं। जी हाँ आरुषि, अभी आप अपनी जो करंट आल्टीट्यूड है कि चंद्रमा के सतह से जो करंट आल्टीट्यूड है 10 किलोमीटर चंद्रमा के सतह से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास। हम अपने And with that, जी हाँ, हम अपने start with the presentations from the industry bodies. So I'm going to request Mr. जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हाँ हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए नरेंद्र मोदी दक्षिणी अफ्रीका के सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जोहानसबर्ग से जुड़ गए हैं। Chairman in space, dignitaries on the stage, and industry delegates in the space economy leaders meeting. It's my honor to represent the Indian space industry here, and I will quickly go Yes, we are privileged to have with us Honorable Prime Minister of India, to have with Narendra Modi ji, Honorable Prime Minister from South Africa, Narendra Modi ji, to encourage us, has joined us from South Africa's Johannesburg to encourage us. was made in October 2011. जी हाँ, आप ये देख सकते हैं एटीट्यूड होल्ड फेज भी आप ये देख सकते हैं आसानी से लैंडर बहुत ने पार कर लिया है। आसानी से ब्रेकिंग की लैंडर फेस ने पार शुरुआत हो चुकी है और अब फाइन भी हम ये देख सकते हैं शुरुआत हो चुकी है। लैंडर भी हम ऊंचाई देख सकते हैं लगभग 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई जो कि लगभग 5.6 किलोमीटर है लगभग जो 800 मीटर फेस के उपरांत लगभग 800 मीटर हो जाएगी। And for international partnerships.
We can hear from the mission operations team that the sensors are performing mission nominally, operations team that the and sensors we are are currently in the performing midst of the nominally, fine breaking phase, which is going to and we are continue for currently in the midst 3 of the minutes, fine breaking and phase, the which is going to altitude continue is for going to be 3 reduced minutes, to nearly and the 800 altitude 800 is going meters to be at the end of reduced this to phase. nearly 800 जी हाँ, meters at the जैसे कि end of this आरुषि जी ने phase. बताया कि लगभग 3 मिनट के जैसे उपरांत कि आरुषि जी ने बताया लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली लैंडर की हाइट और यहाँ पे 800 मीटर लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी और यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी लैंडर की हॉरिजेंटल रेंज भी लगभग वर्टिकल वेलोसिटी इवन डाउन रेंज भी लगभग शून्य होगा. We can see the visual of the lander module, and we can see that the downrange traveled of the lander module 831 kilometers. Downrange traveled is nearly 831 kilometers. To evolve as independent entities to do end-to-end work in space. We have associated members also, which are also some of them international companies. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई आप अपनी चंद्रमा की सतह से लगभग 3 लैंडर की ऊंचाई कम हो चुकी है. अब चंद्रमा की सतह से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है. We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers as we can see. Nearly 2.6 kilometers as we can see. In space. What I wanted to add is from September last year, when the draft telecommunication policy was taken out, and thereafter the draft geospatial policy, and in April this year the release of the space policy, these have been very important events in the growth जी of the हाँ, Indian space अभी sector. आप देख सकते हैं And कि we are लैंडर की awaiting ऊंचाई the अभी आप देख सकते हैं FDI 1 policy किलोमीटर के which are आसपास है. लगभग very coming very 1 soon. किलोमीटर के आसपास है. Notwithstanding that, activities by our industry members have already started in India. We are nearing This the final phase of the power descent. The final phase is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase or the local navigation phase. जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव के एकदम करीब आ चुके हैं. हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं करीब आ चुके हैं. हाँ, हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक तीसरे चरण को भी बहुत ही और सफलतापूर्वक वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं. और शुरुआत भी अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है. Lot of applause indicates that till now the performance has been nominal. Till now we are in the vertical descent phase 1. We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters. The altitude is being brought down from 800 and approaching the lunar surface. And we are nearing and approaching the lunar surface. आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर क्या आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं लगातार कम होता जा रहा है. इस समय हम लैंडिंग साइट लगातार कम होता जा रहा है और इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट 600 मीटर के आसपास और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर फेज के दौरान लगभग 150 मीटर फेज के दौरान ऊंचाई पे लगभग 150 मीटर के लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा. लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा. We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity, the horizontal as well as the vertical velocity is now being and the lander module has begun its descent towards the landing site. And the lander module has begun its descent towards the landing site. Some of this was again flashed by my chairman, but I would like to highlight to you some of the major activities which happen. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है. लैंडर पूरी तरह से उसी को पथ निर्धारित फॉलो कर रहा है. लैंडर पूरी तरह से उसी को लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं. लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं. अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं कि हम चंद्रमा की लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से. We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 have the lander meters hovering above the lunar surface. 150 जी हाँ, आप meters तालियों के गड़गड़ाहट above the भी सुन lunar सकते हैं. surface.
जो कि सेकंड हायोरी गड़गड़ाहट कंप्लीट होने के बाद, जो कि इन सारे सेकंड हायोरी फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। Pixel has been able to launch 3 satellites. जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड जी हाँ कम होता जा रहा है। ध्यान से अभी हम लोग लगभग एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है की ऊंचाई। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. Are providing confirmation of the safety of the landing site. Going on. As a very good signature for the land going on, and this is a very good signature. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई आप ये देख सकते हैं 65 मीटर के आसपास। लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only 2 engines are now being fired. Only 2 engines we are nearly at being fired. Zero velocity, and we are nearly at zero velocity, and now we are approaching the moon surface. We were hovering, and now we are approaching the moon surface. लैंडर की वेगबान को कम किया जा रहा है। लैंडर हम अब लगभग 50 मीटर कम किया जा रहा है, कम आ चुके हैं। और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. We can see the Honorable Prime Minister here to encourage us, Narendra Modi ji, and who is critically looking at the visuals. He is critically looking at the visuals. Our industry will live up to these expectations. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. Let us all wait to hear our applauding. From the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। सेफली और सॉफ्टली हम लोग चंद्रमा के सतह पे लैंड गर्व की बात है। ये हिंदी में एक कहावत है, बहुत ही गर्व की बात दूर के। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के अपने, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सर वी हैव अचीव्ड नमस्कार सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया वी हैव अचीव्ड द मून, सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया इज ऑन द मून। सर I request our honorable prime minister to address us and bless us. Thank you, sir. I request our honorable prime minister to address us and bless us. Thank you, sir. Aspect of space technology parks. मेरे प्यारे परिवारजनों, मेरे प्यारे परिवारजनों, अपनी आंखों के सामने, जब हम अपनी आंखों के सामने इतिहास बनते हुए देखते हैं, इतिहास बनते हुए देखते हैं, तो जीवन धन्य हो जाए। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं, ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं चिरंजीव चेतना बन जाती, चिरंजीव ये पलना बन जाती, अविस्मरणीय पल, अविस्मरणीय, अभूतपूर्व ये क्षण अभूतपूर्व विकसित भारत के शंखनाद का है, भारत के शंखनाद का है, नए भारत के जयघोष का, नए भारत के जयघोष का, मुश्किलों के महासागर को पार करने का, जीत के क्षण चंद्र पथ पर चलने का है, चंद्र पथ पर चलने का है। 140 करोड़ धड़कनों के 40 करोड़ सामर्थ्य का है, धड़कनों के सामर्थ्य का है। भारत में ये क्षण नई ऊर्जा, भारत में नया विश्वास, नई ऊर्जा, नई चेतना, नया विश्वास, नई चेतना का है। भारत के उदयमान
भाग्य के आह्वान भाग्य के आह्वान काल की प्रथम प्रभा में अमृत काल की सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। सफलता की ये अमृत वर्षा धरती पर संकल्प लिया, धरती पर और चांद पर उसे साकार, और चांद पर उसे साकार। वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। अंतरिक्ष में आज हम नए भारत की नई उड़ान के, नए भारत की नई उड़ान के साथियों साक्षी बने। मैं इस समय साथियों ब्रिक्स समिट में इस समय हिस्सा लेने के लिए समिट में दक्षिण अफ्रीका लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हर देशवासी की तरह, लेकिन मेरा देशवासी की तरह चंद्रयान महाअभियान भी लगा, चंद्रयान महाअभियान पर भी नया इतिहास बनते ही, नया इतिहास बनते ही जश्न में डूब गया, जश्न में डूब गया, उत्सव शुरू हो गया, हर घर में उत्सव शुरू हो गया। मैं भी हृदय से अपने देशवासियों के साथ, अपने देश परिवारजनों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ जुड़ा हुआ, इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ चंद्रयान को, मैं टीम चंद्रयान को और देश के सभी वैज्ञानिकों को और देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने बहुत बधाई देता पल के लिए, जिन्होंने वर्षों तक इतना परिश्रम किया, वर्षों तक इतना परिश्रम किया, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे, आनंद और भावुकता से भरे मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी, मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी बधाइयां देता हूं, कोटि कोटि परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम, भारत और प्रतिभा से चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के उस दक्षिणी जहां आज तक दुनिया आज का भी देश नहीं पहुंच, दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच। अब आज के बाद से, अब आज के बाद जुड़े मिथक जान जाएंगे, मिथक जान जाएंगे, कथा नई पीढ़ी के लिए, कहावतें भी बदल जाएंगी, कहावतें भी बदल जाए। तो हम सभी लोग भारत में तो हम धरती को, हम सभी लोग कहते हैं, धरती को चांद को माँ कह, मामा बुलाते हैं, और चांद को कभी कहा जाता था चंदा, कभी कहा जाता था बहुत दूर के, चंदा मामा, मामा दूर के हैं, बहुत दूर के चंदा मामा। अब एक दिन वो भी आएगा, अब एक दिन वो भी आएगा, कहा करेंगे चंदा मामा, कहा करेंगे बस चंदा मामा है, बस एक टूर के है। ऑन दिस joyous occasion, on this joyous occasion, I would like the people of the world, all the people of the world, every country and region, the people of every country, India's successful moon mission, India's successful moon mission alone, is not just this is a year in which this is a year world is witnessing, in which India's world is witnessing, India's our approach of one earth, our approach of one family, one earth, one future, one family is resonating, one future across the globe is resonating. This human-centric approach, this human-centric approach, and that we represent, This is growing at the stage and that we represent, welcome has been universally.
welcome space our economy, moon $1 mission. trillion going to be in Is 2020. also Our based mission on the actually same disagree. human-centric Space approach. economy right now is already Human-centric $1.7 approach. trillion. This success, But depends on how do you therefore, want to belongs define to that. this Do you success. take All the of applications, humanity belongs Uber to or Airbnb all or of Zomato humanity. or Will help all those applications moon and their missions. business values. It will Do you help take by them into other account countries. as Moon part of the mission in the economy? future. Yes. By 35 other billion countries, I am 35 billion confident deliveries have taken place that in India all in last countries in 1 the year. world, 35 billion that deliveries all in countries in the delivery world, is based those on the from the location. global Every south, delivery is based on the indoor map. are Every delivery is capable of based on achieving modeling. such That's what are it is. capable And this is of the public achieving. figure. We are can showing all this aspire detailed exercise on for this. the moon. We can have all no aspire hesitation and to say that beyond. this data For is the very, moon, very correct. मेरे परिवारजनों, And the economic impact. चंद्रयान महाअभियान के ये उपलब्धि, चंद्रयान महाअभियान के ये उपलब्धि को as a holistic चंद्रमा की उड़ान को से आगे जाए, चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हमारे सौर मंडल की सीमाओं का, हमारे सौर मंडल पर सीमाओं का और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक के लिए संभावनाओं को, ब्रह्मांड की साकार करने भावनाओं को जरूर कार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। भविष्य के लिए हमने कई बड़े के लिए और कई बड़े लक्ष्य तय किए और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए। सूर्य के जल्द ही अध्ययन के लिए, सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा, आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा। शुक्र भी इसके बाद इसरो के लक्ष्यों में शुक्र भी एक है। इसरो के लक्ष्यों में गगनयान के जरिए गगनयान के जरिए ह्यूमन स्पेस फ्लाइट पहले भी ह्यूमन स्पेस पूरी तैयारी के साथ जुटा है, पूरी तैयारी के साथ जुटा है। बार बार ये साबित कर रहा है, बार बार ये साबित कर रहा है द लिमिट, sky is not the limit. साइंस और टेक्नोलॉजी साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी भविष्य का आधार है, देश के उज्ज्वल भविष्य का आधार है। आज के इस दिन को इसलिए आज के इस दिन हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा, हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। हम सभी को यह दिन एक उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए भविष्य की ओर बढ़ने के लिए हमें करेगा। अपने संकल्प दिन हमें सिद्धि का रास्ता, अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। इस बात का प्रतीक है ये दिन कि हार से सबक लेकर, कि हार कैसे सबक लेकर जाती है, जीत कैसे हासिल की जाती है। देश के सभी वैज्ञानिकों को, देश के सभी वैज्ञानिकों को और बहुत बहुत बधाई, ढेरों भविष्य कामनाएं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। to make it incline as a business. And then the second, in 2000, we are together with Lockheed Martin is become MSS, Mobile Satellite Services, at the time it was L-band. And then 2009, we are one of the biggest become cellular backhaul for the GSM. Thank you, satellite for being part of our journey to this success, and part of our journey to this success. And let me take this opportunity to thank the project director of Chandrayan 3, this mission. He is here. Project director of Chandrayan 3, Vikram is here. Congratulations to you. Vikram, Kalpana. The associate mission director, Kalpana. And the mission operations director. And the satellite was built at your house satellite center, Shankar and the satellite was built at your house satellite center, Shankar and the director.
we just launched the It's a great the moment of Satya One, or happiness we call on it behalf of Satya team. Three. It's a It's great satellite moment of Republican immense mission. satisfaction in achieving this goal as project director of this mission. On gig. achieving this goal, And then the next the project entire director mission, of this mission, the entire mission operations right from the launch till landing happened flawlessly as per the timeline till landing, and we became the first country as per the timeline to demonstrate the soft landing onto the moon surface. To land, we became the first country to soft landing onto the moon surface, near to the south pole of the moon. We became the first country to go to the near to the south pole of the moon. I take this opportunity to thank navigation guidance and control team. I take this opportunity to thank sensors team, guidance and all the mainframe subsystems team who have brought success to this mission. All the mainframe subsystems team who have brought success to this mission. Operations review committee. I also take the opportunity to thank the mission operations review committee for thoroughly reviewing the mission operations right from spot launch till because of the review process. Target was on spot because of the review. I also thank the ISRO higher management. Right from chairman, I also thank the ISRO higher management, right from chairman ISRO, director URC, and all the center directors and higher project executives, and finally my thanks to the Chandrayan project executives spread across the ISRO centers. Thank you. Mission Director Vikram. Mission Director Vikram. To be part of Chandrayaan 3 and acting as mission director, to be part of Chandrayaan 3, I would like to thank each and every director, team member. I would like to thank each and every team member who has supported in carrying out all the mission operations. I would like to thank my senior management, Chairman ISRO. I would like to thank my senior management, Chairman ISRO. And my senior carrying out and supporting all the members things in a carrying out in proper way. Supporting all the things in a carrying out in proper way. Thank you very much. Associate Project Director Kalpana. Associate Project Director Kalpana. This will remain the most memorable and the happiest moment for all of us for our team Chandrayaan 3. And the happiest moment for all of us for our team Chandrayaan 3. We have achieved our goal flawlessly. From the day we started our goal flawlessly after Chandrayaan, from the day we started rebuilding our breathe in, breathe out Chandrayaan for our teams. It has been breathe in, breathe out Chandrayaan 3 for our team. To all the special tests and the simulations we have conducted meticulously. All the special tests has been possible only because of our immense effort from our has been possible only because of our immense effort from our Chandrayaan 3 with the guidance and of course with the guidance from our chairman ISRO, our directors, and all the guidance from our chairman ISRO, our directors, and all our experts. One and all. Thank you for all the minutest help which has been provided from all the areas. All the minutest help which has been provided from all the areas of departments. Thank you. Thank you. Chandrayaan 3 is a result of the work done by Chandrayaan 3 is a result of the work done by thousands of support team across ISRO and other places, other institutions. Support team across ISRO and other places has been the lead of the center, which has been the integrated all of these efforts of the center, which integrated all of these efforts to speak on behalf of all of you. So I request him to speak on behalf of all of you. Thank you very much for the affection that has been displayed today. Thank you very much for the affection today that has been displayed today. We have achieved what we set out to achieve in 2019. We have achieved what we set out to achieve in 2019, but we have done it. It was delayed by about 4 years. When but we have done it. Was launched. When Chandrayaan 3 was after the launch separation of the spacecraft from launch vehicle, I said separation of the spacecraft from launch vehicle, I said after the soft landing. So the rest of the here I will take after the soft landing. Couple of minutes to tell. So here I will take couple of minutes tremendous to tell amount of effort that has been tremendous amount of effort by the entire project team. When I say project team, it is not just by the entire project team. When I say project team, it is not just only director. Of course, they are the face of the project, and they have been project director. Of course, they are the face of the project. Sleeping, eating, breathing. Chandrayaan for the last 4 years, eating, breathing. Chandrayaan for the last 4 years. Such a large number of people. They have been supported by, particularly in such a large number of navigation, particularly in guidance and navigation area, propulsion guidance
and control area, propulsion system, effort that has been put by people, area, the number of simulations that has been put by people, the number of reviews they have been done, the amount of criticism, the number of reviews they have gone through, and the amount of criticism overcome that they faced, it is and overcome that. As a person who has been watching this for the last 4 years, been watching this for the last 4 years, along with them, goes out for them. My heart of effort, my heart goes out tremendous. The amount of effort, that is what ISRO is tremendous. That is what our organization has taught us to do. Now today this success taught us to do. Has today put us even more higher responsibility, as the Honorable Prime Minister was telling, even more higher responsibility as the Honorable Prime Minister was telling, because we have set the bar now, nothing less than, nothing less spectacular than this is going to be, nothing less spectacular than any of us is going to be so as inspiring for any of us in the future. We will be now, the Honorable Prime Minister mentioned space, we will be now looking at putting the man in Venus, putting landing aircraft around Mars, Venus, and all these activities are going on for few years. All these activities are going on. This success today, few years, will inspire us, and this success today, take those efforts, will inspire us, and will even more strongly take those efforts, so that we will make even our country strongly proud again and again and again. We will make our country very much proud for again and every one of you who have directly or indirectly participated. Every one of you who have directly or indirectly participated in intentionally or unintentionally helped us. Intentionally or unintentionally, all for every one of you. In all, a big thank you, because for every one of you. Even thank you, because casual remark, an unintended point, casual remark, an unintended a person who is can strive and help reach a goal. A person who is making that remark may not have meant it that way. The person who is making that remark may not have meant it that way. I said sometimes that even unintended help. That's why I said is that even unintended help very welcome, and we are very thankful. Is very welcome, and we are very thankful for supporting all of us. The amount of affection I received supporting all of us. The amount of affection I final stage. The number of people who gave us confidence stage, that the number of people go wrong gave us confidence. This is going to be successful. Nothing can go wrong. And in fact, I was not going to be successful. That much confident, because in fact I was not of times that much confident, because I know very well as a person who has been doing in this. I know very well as a person who has been doing in this. There are thousands of things. Any of that could I know can anytime go wrong. There are thousands of things, but any of that could so many of them go wrong and derail. That I only see as so many of the people effort we have put. That I only see as the reflection. So happy to see this effort, and they want us to succeed. So happy to see this effort, and they want us to succeed. We are going to succeed. It is not that want us to succeed. So they know that we are going to succeed. The people want us to succeed. Love and affection. So thank you very much for continue to everyone do our best love and affection and make our flag continue to ISRO's as do our best flag fly high and make our thank you very much. ISRO's as well as India's flag fly high. Thank you very much. Honorable Prime Minister called me, Honorable Prime Minister called me, each one of you, and conveyed and your family greetings to each one of you in ISRO. You and your family for the wonderful work you did in ISRO. To him for the support that he is giving to us. For missions like Chandrayan support that he is giving to us. The missions that are in the offing. I think that's a great word. The missions that are in the offing that we are receiving. Great word pursuing the inspirational work that we are receiving for the nation. Pursuing I want to tell you inspirational work. And I want to thank you also for each and everyone who prayed with us. And I want to thank you also for each and everyone who prayed with us, wanted this success to happen in ISRO. I thank all those people to happen all around the country. I thank all those people beyond the country, all around the country, blessings and wishes, and beyond the country, affection that he has given to each one of us and wishes, and for last so many years. That he has given to each one of us for doing this work for last so many years. People who have been standing with us, especially the name of Kiran Kumar sir, who have been standing with us, especially the name of Kiran Kumar sir, and Mr. Kamalakar and Mr. Kamalakar, Koteshwar Rao. They have been Koteshwar Rao so much
They were part of the team help them to so much get the confidence. They were part of the team the reviews help them to ensure that nothing get goes the confidence with any mistakes. To ensure that nothing goes with any mistakes. And of course, this is not the work of us alone. This is a work of a generation. And of course, this is not the work of us alone. This is a work of a generation. This is a journey we started in Chandrayaan 1, continued in Chandrayaan 2. This is a journey we started in Chandrayaan 1. Craft is still working. Continued in Chandrayaan 2. Lot of communication work with us. Is still working. And all the team that contributed to communication work with us. And Chandrayaan 2 should be remembered that contributed to building Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 should be remembered and incremental progress and definitely a great, huge one it is. And thank you so much for all the support and work that you have done it is. And thank you so much for all the support and work that you have done. Because tomorrow it will no longer be a question of returning passenger and resources or equipment in the middle of the Pacific Ocean, but of operating on hourly schedules, returning as do airplanes at conventional airports and using existing infrastructures. So these are some examples of all the capabilities that can address such orbital space plane. I won't go, we don't have time, but it's transport, cargo transportation, manned flights, and in-service orbit, and a lot of applications. Regarding our skills are a continuation of aviation technologies. We are above all a global architect and system integrator, mastering all the key technological skills for design, development, testing, production, certification, support of complex air system. And we have extended these are key aeronautical skills to the space domain as an extension of the flight domain, faster and higher. As conclusion, I will say that over the past 10 years, the global space sector has undergone an unprecedented transformation and expansion, and as a player in aerospace innovation for over a century, Dassault sees this transformation as a great opportunity. An opportunity to meet new challenges, to make space more accessible, more responsive, more safe, more reliable, and also less expensive. And we are convinced that we have much to contribute to this transformation, and this is a real opportunity to develop fruitful cooperations. Thank you very much. Thank you very much, sir. We have next the Exploration Company France, Ms. Helen Huby. So, hello everyone, and I'm going to bring you in space. Our mission is to democratize space exploration, so to make it affordable, that is to say accessible from a price point of view, to make it sustainable. We are the first in the world to fly a space capsule with green propellant, and to make it open. We are the first in the world to open source our interface, and we want to be able to serve in a cooperative manner International Space Station, American Space Station, and also Chinese Space Station one day. So you see here basically our vehicle, our vision. Our vision is to make basically orbital vehicle like Volkswagen makes car. Our vehicles are made out of 2 bricks, 1 capsule, which fly to space station around the Earth, fly to space station around the moon, and then comes back and then can be reused, flying with green propellant, a technology that we develop in-house. And the second brick is the trunk, the service module, empty or filled with cargo when we go to space station around the Earth, and when we go to the moon we need additional energy, so we develop in-house a cryogenic oxygen methane engine that enable us to go to the gateway
and or to land at lunar surface, and that engine can be refueled in orbit. So hence we can use, for example, the Starship capability as a tank to be able to perform several missions. So these are like cool design, but probably you want to know where we are today. So we started working in September 21. Today we're actually 82 employees because we grew since that slide, so since last week. We've raised around about 55 million euro, which is a record in Europe. We closed the biggest Series A ever raised in Europe by a space company. That's when there were war in Ukraine and double-digit inflation. And we are flying this year in October together with India. So thank you then to Radhakrishnan for the excellent cooperation that we've been able to set up with him. So we fly our first baby capsule second week of October, and it will be launched by PSLV. And in 24, we fly our subscale vehicle that will be launched by SpaceX. I want to show you some cool hardware picture, so that you can see that this is real actually. You see on the left-hand side our baby capsule that will be launched here from India, second week of October. You see in the middle the mid-size capsule, which is currently in the manufacturing process. On the bottom of the slide, you see our new integration room in Germany, and you see on the right-hand side the two in-house engines that we're developing in-house, green propulsion on the one hand, and oxygen methane for landing at lunar surface. And as a conclusion, I would like to thank again India for this amazing organization and for giving me the opportunity to present to you the exploration company, as well as for the great cooperation so that we can launch together this year our first baby capsule, and for the cooperations to come, among them a strong cooperation for the parachute and more to come. Thank you for your attention. Thank you very much, Madam. And with that, I'd like to invite Emeria France, Mr. Philippe Gauthier. Good afternoon, everybody. And thank you very much to give us the opportunity with my colleagues to present our industry. I hope I will survive to the buzzer torture. Okay, Emeria in brief. We are a medium-sized company, 70 million of revenue dollars, 400 employees, 3 plants. And to summarize, we have 3 lines of products for space, but not only space, for sky also. Satellites, we design and make small satellite, balloons, and also we have a product line of equipments to make trajectography. Please, next. Oh, yes, I have the, I did not understand, excuse me. Up. Okay, fine. We propose small sites. Small sat means satellites which are under 100 kilograms, at the beginning and which only. address, At 520 is he going to join? 3 At the beginning market only. At segments. 520 One is is he going to join? connectivity, mainly IoT. We are providing the satellites for a constellation called Kineis in particular. One product line is for Earth observation. And the third one, up to now, is only dedicated to defense application, is for space surveillance, and we are manufacturing right now 2 satellites for the French MOD to be in geo-orbital orbit, and the purpose of those satellites is going to protect the key assets that the forces have in geo-orbit. We have also under development a vehicle to take care about transportation of satellites up to geo-orbit. About the balloons, are systems now which are becoming again, I would say, fashionable. But just focus on the one category of balloons, which are stratospheric balloons. We are developing a maneuvering balloon, which is going to be able to stay at something like 20 kilometers of altitude during 6 months.
and to stay stable in regards of the ground, so that there will be a lot of applications, Earth observation, telco, and so on, and it will be available in next year, in fact. And I wanted also to be brief to talk about our last baby. We are also investor. We are trying to move also downstreams for space application, and it has been well said in the presentation before that the business is much growing in that arena. And we have created one year ago a startup which is going to focus on the subject of water, inland water, management of the water, prediction of disasters, with two segments. We are going to put in orbit a constellation of satellites to make certain measurements daily on 30,000 points on the Earth. And we have also, of course, a digital segment, which is providing data and services to manage quality and quantity of water, and of course it's a key subject all around the world. Thank you very much. Sudhakar Rubnish. Thank you very much, sir. Sudhakar, And please the esteemed delegate from Share one My is male Space, voice France, in Mr. Romain. female voice in English. One is male voice in Hindi, and female voice in English. Tell them what the instruction comes from you. And you just good afternoon, everyone. Dear Chairman, I'm very honored to be here with you and to present to you my company, Share My Space. Please tell them how you So we are a French-based company with a global ambition, and we work in the field of space surveillance and space operations safety and security. So we were incorporated in 2017 for one fundamental reason, Earth orbit congestion. Okay, you tell the same thing. So now there are more and more satellites in Earth orbits, more and more space debris that are causing increasing risks for the sustainability of human activities in space. So our fundamental mission is to tackle that. So how do we do it? So we've built a system that we called our orbital information system, which is a set of algorithms and database architecture, all secured. So we process, we ingest, process, package, and distribute high added value data for our customers, who are institutions, military bodies, and commercial players in the space sector. So we ingest data from various sources, public sources, sources from partners, including our customers. And as a key part of our orbital information system, we control a network of optical stations scattered around the world. We currently have 4 operational optical stations. And we've actually designed, developed, and deployed the key innovation that we call the multi-telescope observation station. So it's an optical system made out of 4 optical telescopes that scan the sky and detect all the objects that cross an observation ring. So it works a little bit like a radar system would do, but using optical technology, which enables us to drive the costs down and to bridge the gap with the commercial market. So we've designed the system to be extremely sensitive in LEO, across all orbits, and in particular in LEO, also very, very accurate, so it enables us to address a wider market. So currently we detect even the smallest objects in the US catalog, both in LEO and in GEO. So going forward, so yeah, we've successfully addressed the key segments of our market, so institutions, military, and commercial players. We have 15 customers in 7 different countries around the globe, and we've really managed to package key products for each of these segments. So we are looking forward first I'd like to thank again the ISRO and CNES for having us here, and we're definitely looking forward to further collaborations with Indian partners. Thank you. Thank you very much, sir. And ladies and gentlemen, before I invite the next speaker from Leonardo, Italy, we have Thales Alenia Space lined up. After that, I invite iSpace Incorporated, Japan, Sagri, Japan, and Unmanned Exploration Laboratory, Republic of Korea. So let me now invite from Leonardo, Italy, Mr. Sandro Panagini.
Good afternoon, everybody. Thank you for the possibility to present Leonardo activities and in special a focus on the space Leonardo activities. As you know, Leonardo is a global company that develops multi-domain operational capabilities in the aerospace, defense, and security sector with an integrated offer of high technology solution for military and civil application. 4 business sectors are managed by Leonardo. One is the helicopters through direct resources like the helicopter division and several cooperation and joint ventures. Another is aeronautics, then defense, electronics and security, and space. Space is, Leonardo is acting as with direct resources, providing activities, but through also the Telespazio, the joint venture with Telespazio, which is for the 70% owned by Leonardo, and Thales Alenia Spaces, which is owned of the 33% of the share, and also Avio for the launcher. So you can see that there is a cover all the completely chain value of the industry space. It's worthwhile to mention that the 30% of share of Leonardo is owned by Italian Ministry of Economy and Finance, while all the other is on retail market through institutional investor and on the market. 90% of the institutional float is international. Space. Leonardo covers the entire value chain of the space industry, from the manufacture of satellites and orbiting infrastructure to the production of high-tech equipment and sensor, in addition to developing a new space application and in management of satellite services up to propulsion and launching system. Through the joint ventures, Telespazio, satellite services for the design, development, launch, and in-orbit controlling space systems, and servicing and application for Earth observation. Through Thales Alenia Space, satellite system for telecommunication, navigation, Earth observation, probes and rovers for space exploration, and multifunction orbiting modules. Directly, with ordinary resources, Leonardo provides instruments and equipment. Instruments, electro-optical instrument and hyperspectral payloads, laser transmitter and robotic system for space exploration and the study of our planet. And as equipment, photovoltaic panels, atomic clocks, attitude sensor, power distribution system, and orbital micropropulsion. Just to give you an idea of where the equipment and the instruments of Leonardo are in the solar system, we are far of the solar system up to close our system. Just to pick up two of these missions. One old, that is New Horizon, for example, launched in 2006, in which the Star Trekker developer, manufactured developed by Leonardo, owned the proper engagement to the planet and the proper flyby to Plato's planet. While one of the most recent is JUICE mission, in which Leonardo provide the PVA for the power of the craft. We are speaking about 85 square meters. मिशन के निश्चितता और अनिश्चितता के बीच मिशन के निश्चितता और अनिश्चितता के बीच अगर मैं सही मायने में कहूं तो धन्यवाद दारू से कोई अगर मैं सही मायने में कहूं तो किसी भी देश के द्वारा संचालित किया जा रहा हो और चाहे किसी भी देश के द्वारा संचालित किया जा रहा हो अनिश्चितता के बीच बहुत ही महीन अंतर होता है और अनिश्चितता के बीच बहुत ही महीन अंतर होता है जिससे कि लेकिन सफल ना हम असफल होता ना हम हारे लेकिन ना हम के सुधारते हुए हारे आज पूरी तरह से स्पष्ट किया है कि सुधारते लैंड मॉड्यूल आज पूरी तरह से आसपास पे चंद्रमा की सतह पर लैंड मॉड्यूल सॉफ्ट लैंडिंग के तौर पे चंद्रमा की सतह पर सभी दर्शकों की जानकारी के लिए अब हम इसरो के सभी दर्शकों की जानकारी के लिए अब हम इसरो के प्रस्तुत करेंगे सभी लूनर मिशंस की इसरो का पहला मून मिशन प्रस्तुत चंद्रयान 1 जी हां अक्टूबर 2008 पहला मून मिशन पीएसएलवी रॉकेट के द्वारा सफलतापूर्वक 2008 में किया गया पीएसएलवी रॉकेट के द्वारा सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज करके पहले ही चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज है कि पहले ही विश्व के तमाम अंतरिक्ष वैज्ञानिक है कि और स्पेस एजेंसियां विश्व के तमाम अंतरिक्ष वैज्ञानिक जानने के लिए स्पेस एजेंसियां चंद्रमा को और करीब से जानने के लिए 2 की दिख रही हैं जो इसरो का अगर हम बात करें चंद्रयान जुलाई 2019 जो इसरो का दूसरा मून मिशन ताकतवर रॉकेट जुलाई 2019 द्वारा इसरो के सबसे ताकतवर रॉकेट LBM-3 द्वारा भी लगभग 4 साल बाद प्रक्षेपित चंद्रमा के 100 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में चंद्रमा के
बहुत 100 किलोमीटर क्वालिटी का डेटा ऑर्बिट में दान करते हुए मिशन के प्रारंभ में इसका डेटा 1 साल निर्धारित की गई थी। मिशन के प्रारंभ में LCI द्वारा 1 साल निर्धारित सटीक इंजेक्शन, परंतु मैनेजमेंट की वजह से चंद्रयान 2 काफी लंबे समय तक की वजह से चंद्रयान 2 लंबे समय चंद्रमा के लगभग सभी भागों का चित्र चंद्रयान 2 इस चंद्रमा के लगभग सभी भागों का चित्र ले चुका है, यानी कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेलोड OHRC विश्व का सबसे मीटर बड़ा है जो कि चंद्रमा के सतह का लगातार बड़ा है जो कि चंद्रमा के समय का लगातार निवेदन करूंगा कि वो आप लोगों को मैं उसी चीज से निवेदन करूंगा चंद्रयान 3 के बारे में लोगों को इसरो के वर्तमान में चंद्रयान 3 के बारे में बताया। इसरो के अभी आपने लूनर मिशन के बारे में बताया। इसरो चलते हैं कि लूनर मिशन का विवरण अब चलते हैं टुवर्ड्स चंद्रयान। A contract to fly constellation for the high resolution radar systems. The reason behind that is the increase time revisit that is very much required by the customers. Satellite ranging in the weight average of 200 kilograms and in a constellation mode. Going to navigation, we are building the second generation of the Galileo system in Europe. Then Earth to explore, space to explore. Our heritage starts from Space Lab, therefore we are talking of the 70s, more or less, or the 80s. नमस्कार, इसरो के इस महाअभियान से जुड़ने के लिए नमस्कार, आप सादर आमंत्रित महाअभियान से जुड़ने के लिए मैं आप सादर आमंत्रित अपने को होस्ट श्रीमती आरुषा सिंह के साथ आप सभी को होस्ट और देश विदेश से जुड़े सभी दर्शकों आप सभी को हार्दिक और देश विदेश से जुड़े सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन 2000 स्वागत करता हूं। आज की शाम 23 अगस्त 2023 और सभी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के साथ इसरो के लैंडर मॉड्यूल और सभी चंद्रमा के वैज्ञानिकों के साथ लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा के सतह पर तैयार और उत्सुक ऐतिहासिक पलों को देखने के लिए इसरो के गौरवपूर्ण इतिहास में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है। इसरो के गौरवपूर्ण इतिहास में और आज हम एक और अध्याय जुड़ने जा रहे हैं बनेंगे। और आज हम सब लोग आप ये सारे विजुअल्स अपने स्क्रीन पर इसरो के मिशन ऑपरेशन सारे विजुअल्स अपने स्क्रीन से देख रहे हैं। इसरो के मिशन ऑपरेशन जो कि बेंगलुरु में स्थित यानी टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क जो कि बेंगलुरु में स्थित प्रसारित किया जा रहा है। ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क इस ट्रैक से विजुअल्स आपको पावर डिसेंट के काउंटडाउन और उस पर विजुअल्स कर रहा है डिसेंट के लैंडर और चंद्रमा के साउथ कर रहा है जिस पे चलकर लैंडर लैंडिंग आज चंद्रमा के साउथ पोल पे आपको ध्यान दिला और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इस समय हम लोग पावर डिसेंट शुरू होने से दिला दूं लगभग इस समय हम लोग पावर डिसेंट शुरू होने से जो दर्शक लगभग 22 मिनट थोड़ी देर से जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें आप थोड़ी देर से जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें ऑफिशियल वेबसाइट ऐतिहासिक फेसबुक ट्विटर इसरो के और यूट्यूब पे भी देख सकते हैं फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। Thank you very much. Honorable dignitaries, delegates, scientists, honorable media personnel, delegates, and dear viewers, scientists, a very good evening to all of you. And dear viewers, we at ISRO, a very good welcome you to all of you. Live coverage, we at India's prestigious to Chandrayaan missions of landing event on the lunar surface. Chandrayaan 3 missions. These are the visuals on the from mission operation complex. These are ISRO's telemetry tracking and command network is ISRO's situated in Namma Bengaluru, Karnataka. Situated in Namma Bengaluru, and my colleague Dr. Padamdev Mishra are your hosts for the evening. Dr. Padamdev Mishra accompany you on your journey for the landing event and shall accompany you on the journey of the landing event from powered descent we shall be witnessing touchdown. The final phase of the today we shall be witnessing technologically challenging mission operations and most technologically challenging mission operations will be making Chandrayaan safe and soft landing the lander module on the surface will be making a safe and soft landing. These display on the surface of the moon show the countdown to the power descent start. These display screens as well as the show the countdown that will be followed by the lander module as well as the path that will be followed by the lander module from the commencement of power descent. 18 minutes away India is at the brink of power descent. As we all India is at the brink of creating history, the landing on Moon's South Polar region. To witness the landing on Moon's South Polar region. To the Moon and also lunar data. As for the financial achievements, we would like to emphasize that we successfully raised over 200 million US dollars before IPO, and in this April, we succeeded in IPO in Tokyo Stock Exchange growth market.
So it is the first IPO as a startup, space startup in Japan. And this is इसरो का पहला मून मिशन चंद्रयान 1 अक्टूबर 2008 में last year in December, and we attempted lunar landing in April 2003. So unfortunately, the result was ended as hard landing. धन्यवाद आरुषि। अगर मैं सही मायने में कहूं तो धन्यवाद अंतरिक्ष का कोई भी मिशन हो और चाहे किसी भी देश के द्वारा संचालित किया जा रहा हो और चाहे किसी भी देश के द्वारा संचालित किया जा रहा हो, अनिश्चितता के बीच बहुत ही महीन अंतर होता है और अनिश्चितता के बीच की एक बहुत ही सफल या असफल होता है, जिससे कि एक लेकिन ना हम थके या असफल होता है, ना हम हारे, लेकिन ना हम पिछली कमियों को सुधारते हुए आज पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि सुधारते लैंडर मॉड्यूल आज पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि सतह पर लैंडर मॉड्यूल निश्चित तौर पे चंद्रमा के सतह पर सभी दर्शकों के जानकारी के लिए अब हम इसरो के सभी दर्शकों के जानकारी के लिए अब हम इसरो के प्रस्तुत करेंगे अब तक के सभी लूनर मिशन। जी हाँ, संक्षिप्त विवरण। इसरो का पहला मून मिशन चंद्रयान 1, जी हाँ, अक्टूबर 2008 का पहला मून मिशन चंद्रयान 1 सफलतापूर्वक अक्टूबर 2008 में पीएसएलवी रॉकेट के द्वारा चंद्रयान 1 ने चंद्रमा के सतह पर पानी की खोज चंद्रयान 1 ने चंद्रमा के सतह पर पानी की कारण है कि पहले ही आजकल विश्व के तमाम अंतरिक्ष वैज्ञानिक कारण है कि और स्पेस एजेंसियां विश्व के तमाम अंतरिक्ष वैज्ञानिक और करीब से जानने से एजेंसियां दिख रही हैं। चंद्रमा को और करीब से जानने बात करें चंद्रयान 2 दिख रही हैं, जो इसरो का दूसरा, अगर हम बात करें चंद्रयान 2 2019 जो इसरो का दूसरा सबसे ताकतवर रॉकेट जुलाई 2019 में द्वारा सफलतापूर्वक ताकतवर रॉकेट किया गया था LVM-3 द्वारा, और आज भी लगभग 4 साल बाद किया गया था। या चंद्रमा और आज भी लगभग 4 साल बाद ऑर्बिट में घूमते हुए या चंद्रमा के 100 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हुए बहुत मिशन के प्रारंभ का डेटा प्रदान कर रहा है। 1 साल निर्धारित की गई प्रारंभ में, परंतु LVM-3 द्वारा 1 साल निर्धारित की गई इंजेक्शन और मिशन मैनेजमेंट द्वारा से बहुत ही सटीक इंजेक्शन काफी लंबे मैनेजमेंट कार्य वजह से चंद्रयान 2 समय तक कार्यरत। चंद्रमा के लगभग सभी भागों का चंद्रयान 2 है, इसका चंद्रमा के लगभग सभी भागों का पेलोड ले चुका है। OHRC का एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा OHRC का सबसे बेहतरीन हाई रेजोल्यूशन कैमरा जो कि चंद्रमा की सतह का लगातार पिक्चर भेज रहा है, जो कि चंद्रमा की सतह का लगातार करूंगा भेज रहा है। वो आप लोग मैं आरुषि वर्तमान मिशन चंद्रयान 3 के बारे में आप लोगों को इसरो के वर्तमान मिशन चंद्रयान 3 के बारे में बताएं। अभी आपने मिश्रा जी के द्वारा सुना इसरो के अभी आपके लूनार मिशन जी के द्वारा सुना इसरो के अब तक के लूनार चंद्रयान का विवरण। द फॉलो अप मिशन ऑफ Chandrayaan towards Chandrayaan has been designed the follow up mission or mission goals which has been the primary objective of Chandrayaan 3 mission is the demonstration of Chandrayaan soft landing on the lunar surface of safe and soft landing is a critical aspect for ISRO's future interplanetary critical aspect. In addition to this, the mission objectives also include in addition to demonstration of the mission objectives also include and conduction demonstration of scientific experiments on moon and conduction of in situ scientific on the shoulders of India's heaviest rocket LVM carried on the shoulders on the 14th of India's heaviest rocket Chandrayaan 3 was placed in the 14th of July. Parking orbit Chandrayaan 3 was placed 170 elliptic parking orbit of size 170 by 36,500 kilometers. Following the incremental trajectory approach, in its mission plan of following the incremental trajectory approach, carried a total of 5 earthbound maneuvers, which took place on the 25th of July. Apogee raising maneuver, the spacecraft place in an orbit 25th of July, 250 placed the spacecraft in an orbit kilometers, of 250 by 1,27,000 kilometers. The translunar injection was carried out, first August, after which the translunar injection was carried out. The final leg of its long journey, the composite module of nearly 3,84,000 kilometers for its rendezvous with the moon. 3,84,000 kilometers. The TLI was its rendezvous with the mission, enabling the TLI was a key step in the mission, gravitational pull, enabling the travel to the moon to escape Earth's gravitational pull of 288 by 3,69,228 kilometers was achieved at the end of the translunar kilometers was achieved at the end of the translunar injection. ट्रांसलूनर इंजेक्शन किसी भी इंटरप्लेनेटरी मिशन के लिए बहुत ही आवश्यक, किसी भी इंटरप्लेनेटरी मिशन के लिए
बहुत ही सफल मैन्यूअर के बाद कठिन चंद्रयान 3 पृथ्वी से दूर निकल मैन्यूअर के बाद चंद्रयान के प्रभाव क्षेत्र से दूर निकलकर हाइपरबोलिक ट्रैजेक्टरी चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र में पहुंचाया गया। हाइपरबोलिक ट्रैजेक्टरी 5 अगस्त 2023 पहुंचाया गया। लूनर ऑर्बिट 5 अगस्त 2023 चंद्रयान 3 को 160 किलोमीटर के पेरीलून द्वारा चंद्रयान 3000 किलोमीटर 160 किलोमीटर के पेरीलून चंद्रमा के 18000 किलोमीटर के अपोलून के साथ चंद्रमा के इलिप्टिकल की तरह ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। एक बहुत जटिल ऑपरेशन की तरह एलओआई भी इसमें हमें बहुत जटिल देना आवश्यक होता है कि उपग्रह हमें ध्यान देना आवश्यक होता है कि से घटाया जा उपग्रह के वेगमान अन्यथा एक निश्चित चंद्रमा से घटाया जा से बाहर निकल जाएगा। उपग्रह चंद्रमा के प्रभाव एलओआई से सफलता बाहर निकल जाएगा। परिचालन के बाद चंद्रयान की सफलता को 4 बार परिचालन के बाद किया गया। चंद्रयान इस दौरान कक्षा को 4 बार और परिवर्तित किया गया। 160 किलोमीटर कर दिया ऊंचाई को घटाकर इस पूरी 160 किलोमीटर मॉड्यूल का लगभग 700 पूरी किलोग्राम में propulsion मॉड्यूल का लगभग 700 और चंद्रयान 3 के वेगमान को ईंधन का उपयोग हुआ 800 और चंद्रयान 3 के वेगमान कर दिया गया लगभग 850 लैंडर मॉड्यूल को कम कर लगभग 150 किलोमीटर लैंडर मॉड्यूल ऑर्बिट में लगभग करने के बाद 50 किलोमीटर के 17 अगस्त 2023 को करने के बाद propulsion मॉड्यूल से 17 अगस्त 2023 को पुनः लैंडर मॉडल के अलग कर दिया गया। दो डुई बुस्ट पुनः लैंडर मॉडल द्वारा 150 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट द्वारा घटाकर 50 किलोमीटर गुड़े 130 सर्कुलर ऑर्बिट से घटाकर इलिप्टिकल ऑर्बिट में गुड़े 130 किलोमीटर के इस दौरान ऑर्बिट में यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि 800 न्यूटन के चारों सुनिश्चित कर दिया गया कि पावर 800 न्यूटन किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। पावर डिसेंट के लैंडर मॉडल चुनौती का सामना कर सकें। 4 दिन तक चंद्रमा लैंडर परिक्रमा करता रहा ऑर्बिट में 4 दिन तक सभी चंद्रमा की परिक्रमा करता रहा। पावर डिसेंट से पहले कार्यात्मक सभी सब वेरीफाई और वैलिडेट किया जा सके। से पहले कार्यात्मक रूप से वेरीफाई इस दौरान चंद्रयान 2 और लैंडर मॉड्यूल की आपस में बातचीत दौरान चंद्रयान 2 और लैंडर मॉड्यूल की आपस में बातचीत भी हो चुकी है। तो लैंडर मॉड्यूल अब तक की यात्रा की बात करें और तो लैंडर मॉड्यूल अब बार चंद्रमा का चक्कर लगा चुका है और लगभग 120 यात्रा में लगभग 55 लाख किलोमीटर की यात्रा भी और इस पूरी यात्रा में लगभग 55 लाख किलोमीटर की पूरे अभियान में यह भी सुनिश्चित किया गया कि अब तक के सारे पूरे अभियान में यह भी सुनिश्चित किया गया कि लैंडिंग सारे ऑर्बिट मैन्यूअर्स इस पावर डिसेंट की शुरुआत से ही लैंडिंग के ऑर्बिटल प्लेन में बना रहे। पावर डिसेंट की शुरुआत से ही लैंडर के ऑर्बिटल प्लेन में बना रहे। Make it further complicated. We have arrived at the crucial juncture wherein the orbit plane contains the desired landing site, wherein the orbit plane contains the desired landing site. We are also happy to announce that live images from the Chandrayaan 3 lander imager camera, live images from the Chandrayaan 3 lander imager camera. The demonstration of soft landing on the moon's surface is the demonstration of soft landing due to the innumerable challenges and complexities involved. Due to the innumerable challenges and complexities involved. From nearly 6,048 kilometers per hour, from without any 6,048 kilometers per hour, without any aid from the lunar dust at the time of landing, and the craters and lunar dust at the time of the moon's surface, and the craters and further complicated scattered over the moon's surface, make it further complicated. Chandrayaan 3 design has been built after new and improved Chandrayaan 3 all the scenarios has been the lander module can encounter. All the scenarios with several software module can encounter. Provision for full level redundancy. Several software improvements. A plethora of special tests for full level redundancy. The integrated hot test, of special integrated cold test. The lander leg drop tests were carried out for the lander module. And lander leg drop tests were carried out for the lander module. Provided great confidence in the performance tests of all the onboard great confidence propulsion system of all the onboard guidance control propulsion navigation algorithm and associated guidance the key findings and navigation algorithms have enabled to improve the overall system performance have enabled the largely unexplored south pole of the moon has been chosen as the intended landing site of the moon since there is a possibility as the intended landing site and other minerals which would be vital resources for future explorers which would be vital resources from continuing investigations pioneered by Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 the Chandrayaan 3 by Chandrayaan 1 will also provide invaluable data to the science community will also provide the world invaluable data let us give our viewers a glimpse around the configuration let us give our viewers a glimpse on the configuration of Chandrayaan 3 mission. Good afternoon, dear colleagues. I didn't bring any portable demo objects with me as the previous speaker did, but I will try to surprise you and flip my
presentation backwards. This is a very complicated chart that just justifies our presence. चंद्रयान 3 का मिशन प्लान लगभग चंद्रयान 2 की तरह ही बनाया गया है। यहाँ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि बनाया गया है चंद्रयान 3 यहाँ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि से लेकर के चंद्रयान चंद्रमा के निकट रॉकेट से अलग होने से लेकर के सारी चंद्रमा के निकट चंद्रयान 2 के स्थापित होने तक और सारी गतिविधियां कह सकते हैं कि यह प्लान पूरी तरह से सब हम यह कह सकते हैं कि यह प्लान पूरी लैंडर मॉड्यूल के सेंसर और propulsion सिस्टम को लैंडर इस तरह से मजबूत किया गया है कि propulsion लैंडर पावर डिसेंट तरह से मजबूत किया गया है आपदा से बाहर लैंडर पावर डिसेंट के मुख्य उद्देश्य किसी भी आपदा से बाहर आकर के इस क्रम में लैंडर के मुख्य सेंसर्स कारा इस क्रम में लैंडर के मुख्य सेंसर एलडीवी कारा और एलएच लासा कार्यात्मक परीक्षण किया जा चुका है और एलएच डैक का कार्यात्मक जो कि पूर्णतः स्वदेशी तकनीकी से बनाया गया एलडीवी जो कि पूर्णतः स्वदेशी तकनीकी से बनाया गया लैंडर के वेलोसिटी को तीनों अक्षों में मुख्य कार्य करना लैंडर के वेलोसिटी पावर डिसेंट के दौरान लैंडर के सटीक पोजीशन पावर और वेलोसिटी के दौरान ज्ञान होना लैंडर की सटीक पोजीशन और वेलोसिटी का ज्ञान लेजर इनर्शियल आवश्यक है एंड एक्सीलरोमीटर यानी लेजर इस कार्य को पावर डिसेंट एंड एक्सीलरोमीटर भी निभाएगा इस कार्य को पावर डिसेंट के दौरान ट्रैजेक्टरी जनरेशन निभाएगा जो कि चंद्रयान 3 मिशन के लिए बहुत ट्रैजेक्टरी जनरेशन जो कि चंद्रयान ऑर्बिट मिशन के लिए बहुत ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर ऑर्बिट मैन्यूवर के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है इस क्रम में मैं यह भी आपको बता दूं कि ऑर्बिट डिटर्मिनेशन क्रम में जो कि मैं यह भी आपको बता दूं कि ऑर्बिट डिटर्मिनेशन बहुत ही एक्यूरेटली बताता है और वेलोसिटी बहुत ही कठिन बहुत ही एक्यूरेटली बताता है और एस्टिमेशन बहुत ही कठिन और जटिल यहाँ यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि चंद्रयान 2 का यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि 4C पेलोड चंद्रयान 2 का काफी ऊंचे स्तर का डैम वो 4C पेलोड जिसके फलस्वरूप काफी लैंडिंग साइट की सीमा को बढ़ाकर जिसके 4 लैंडिंग साइट की सीमा को बढ़ाकर जो 4 किलोमीटर लैंडिंग कराने में काफी सहायक डिसेंट के दौरान सॉफ्ट लैंडिंग कराने में काफी सहायक सिद्ध होगा। Apart from the sensors, Chandrayaan 3 is equipped with the suite of sophisticated Chandrayaan 3 is equipped with the suite while of Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 orbiter have provided while Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 orbiter have provided equally abundant remote sensing on-site localized measurements equally important ground are the on-site localized measurements lander and rover provide payloads which are completely new lander and rover have payloads analysis of lunar surface and will perform the two spectroscopes on rover of lunar surface APXs and LIBS the two spectroscopes measure the surface elemental abundances will actively measure the surface elemental abundances at the landing location. The lander carries a seismometer ILSA that can sense impact events and lunar ILSA that can sense impact events and lunar quakes. Will measure the temperature profile and thermal conductivity of will measure the temperature profile and thermal conductivity. The Rambha payload will carry out lunar ionosphere studies. The Rambha payload will carry out lunar ionosphere studies passive while the laser retroreflector array future space shall be a passive location altimeter for future space. The propulsion module has not been left behind and the propulsion experiment has not been left behind has been added and to it as a value addition. Shape payload has been added help in understanding the nature and characteristics of water-rich understanding the nature and characteristics in the future study of potentially habitable exoplanets. In the future study of potentially habitable exoplanets. We are minutes away from the start of powered descent. We are minutes away. The entire powered descent shall be carried out by the onboard autonomous landing sequencer shall be carried out or by the onboard autonomous landing sequencer or preloaded to the lander module. A series of instructions. These instructions preloaded to the lander module executed. These instructions include the commands to be executed and decisions to be made and executed autonomously throughout the powered descent. Decisions to be made and executed autonomously throughout the powered descent. जी हाँ, अब हम पावर डिसेंट के बहुत ही करीब आ चुके हैं। जी हाँ, अब हम पावर बताते चलें कि पावर डिसेंट को कुल 4 चरणों में बांटा गया है। कि पावर डिसेंट सबसे पहले आता है 4 चरणों में बांटा गया है, जिसमें लैंडर पहले आता है चंद्रमा की सतह से 30 में लैंडर की ऊंचाई को चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर से घटाकर इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में दिया जाएगा। लगभग इस 11.5 मिनट पूरा करने में और इसका लगभग समानांतर 11.5 मिनट 1680 मीटर समानांतर घटाकर 1680 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 358 मीटर। We have continuous flow of lander telemetry data
We have continuous flow of lander telemetry data from ISRO located in Belalu, Bengaluru. The data is being acquired real-time by station and is flown to the mission operation complex through our communication links. Flown to the mission operation complex. We also have support from ESA and JPL-DSN stations. We also have support from ESA. There will be no ground intervention once the ALS takes charge. There will be no ground intervention. The preparation for today's event had started 48 hours before. The preparation for today's event had started and 48 hours parameters for the autonomous landing sequence were carried parameters for the autonomous landing sequence were carried out. The whole descent is divided into 4 phases. The rough braking phase is divided into 4 phases. Hold phase, the rough braking phase, and the local navigation phase or the terminal descent phase, and the local navigation phase or the terminal descent phase. जी हाँ, एटीट्यूड होल्ड फेज जो कि पावर डिसेंट का दूसरा चरण है। एटीट्यूड होल्ड बहुत ही महत्वपूर्ण पावर डिसेंट का दूसरा चरण 10 सेकंड के बहुत ही स्मॉल ड्यूरेशन के दौरान इस लैंडर के 2 महत्वपूर्ण स्मॉल ड्यूरेशन के दौरान और लैंडर की 2 महत्वपूर्ण ऊंचाई की गणना कारा और लासा के पूरा लैंडर की ऊंचाई की लैंडर चंद्रमा के सतह से कुल 6.8 किलोमीटर लैंडर चंद्रमा के सतह से कुल 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। During the rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1,680 meters per second to 1,680 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers. The altitude will be brought down at the end of rough braking to 7.4 kilometers at the end of rough braking. Good afternoon, ladies and gentlemen. Currently, we can see the scientists are analyzing the lander data. We can see the scientists are analyzing the lander data. जी हाँ, हम ये देख सकते हैं कि मिशन ऑपरेशन जी हाँ, हम ये देख सकते हैं बैठे सभी वैज्ञानिक ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स जो भी डेटा बैठे सभी वैज्ञानिक वो जो भी डेटा डीप स्पेस नेटवर्क आईडीएसएन 32 के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है 32 और अगर हम बात करें प्रोवाइड किया जा रहा है तीसरे चरण का और अगर हम बात करें पावर डिसेंट के तीसरे चरण का लैंडिंग साइड से जस्ट होगा 800 मीटर में लैंडर पर लैंडिंग साइड होगा जस्ट 800 मीटर की ऊंचाई पर पूरा होने में वर्टिकली होगा 3 मिनट लगेंगे इस चरण को और इस चरण होने में होते ही 3 मिनट लगेंगे वेलोसिटी और इस लगभग पूरा होते ही शून्य हो जाएगा लैंडर की वेलोसिटी लगभग The scientists here at ISTRAC are glued to their systems, analyzing all sorts of complex data. To their systems, analyzing all sorts of complex data. We are very close to the powered descent. We are very close of the powered descent phase. The powered descent to the start of the powered descent phase. जी हाँ, अगर हम अब बात करें पावर डिसेंट जी हाँ, चौथे अगर अंतिम चरण अगर हम अब बात करें लोकल नेविगेशन चौथे और अंतिम टर्मिनल डिसेंट फेज जो कहा जाता है लोकल नेविगेशन इस दौरान या टर्मिनल के 2 इंजन बंद कर दिए जाएंगे इस दौरान और लैंडर के 2 इंजन बंद कर दिए जाएंगे और वेलोसिटी और लैंडर के सेंसरों द्वारा नेविगेशन को भेज और वेलोसिटी की गणना इस दौरान नेविगेशन लैंडर 150 मीटर की ऊंचाई को इस दौरान प्राप्त करने के बाद 150 मीटर की ऊंचाई को 131 करने के बाद लगाएगा इस पड़ाव पे आने के बाद 131 सेकंड लगाएगा 22 सेकंड के लिए इस पड़ाव पे आने के बाद पुनः लैंडर 22 सेकंड के लिए हवरिंग करेगा GSM backhaul, government for digital rollouts, services including the earth monitoring, military and defense, other data and communication services, disaster recovery and rescue services. आप इस समय अपने स्क्रीन पे मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में इस समय बैक स्क्रीन पे मिशन ऑपरेशन सभी मान्यगणों को देख सकते हैं बैठे जो कि बहुत ही सभी मान्यगणों के देख सकते हैं टेलीमेट्री डेटा को उत्सुकता के साथ अभी हम लोग पावर डिसेंट देख रहे हैं अभी हम लोग कुछ ही पल दूर हैं शुरू होने से जस्ट कुछ ही पल दूर हैं पावर डिसेंट शुरू होने में लगभग पावर डिसेंट शुरू बचा है लगभग हमको 30 सेकंड ही बचा है मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स हमको ये सारे डेटा मिशन ऑपरेशन के द्वारा जो कि लगातार लैंडर आईडीएसएन कनेक्शन में बना हुआ है द्वारा प्रदान लगातार लैंडर के कनेक्शन में बना हुआ है प्रदान कर रहा है Dear viewers, the pivotal power descent has begun. And the lander module is propelling towards the moon's surface and the lander along the intended trajectory towards the moon's surface along the intended trajectory.
I'll say is, this is what we're most mostly known for, Starlab. Starlab is Voyager is building the first. जी हाँ, अब हम देख सकते हैं रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत हम देख हो चुकी है। रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत हो चुकी है। During this rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1,680 meters per second to 358 meters per second. From 30 kilometers, the altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of 690 seconds or 11.5 minutes. Duration of 690 seconds, the laser inertial reference and accelerometer package the laser inertial reference and accelerometer package LIRAP is aiding in the navigation. अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जी हाँ, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं 191 किलोमीटर लैंडर हॉरिजॉन्टल दिशा में चल चुका है। 191 किलोमीटर हॉरिजॉन्टल दिशा में चल चुका है। वेलोसिटी लगभग 31 किलोमीटर अभी तक इसकी वेलोसिटी लगभग 31 किलोमीटर बनी हुई है। The lander module has traveled a distance of approximately 228 kilometers. Approximately 228 kilometers that will be traveled during this phase shall be nearly 713.5 kilometers. Shall be nearly 713.5 kilometers. जी हाँ, कुल 745 किलोमीटर के इस रफ ब्रेकिंग फेज में 745 किलोमीटर के इस हम लोग लगभग अपनी यात्रा 20% हम लोग लगभग कर चुके हैं। अपनी यात्रा 20% कंप्लीट कर चुके हैं। पावर डिसेंट की यह शुरुआत हम कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक पावर डिसेंट और सदी हुई शुरुआत हम कह सकते हैं जिसमें लैंडर सटीक अपने बेगमान हुई है को अनुमानित जिसमें लैंडर घटा रहा है अपने बेगमान को अनुमानित तरीके से घटा रहा है। The altitude of the lander module will reduce from 7.4 kilometers to 7.4 kilometers during the next phase, which is going to be during the next phase, which is going to be. We can currently see that the altitude of the lander module is nearly 31 kilometers. Of the lander module is nearly 31 kilometers. अभी हम इस ग्राउंड ट्रेस को देखते हुए कह सकते हैं आरसीसी अभी हम ब्रेकिंग ग्राउंड ट्रेस को देखते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत देख सकती हैं बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोजेक्टेड ग्राउंड ट्रेस ये देख सकती हैं उसी पे अपना लैंडर प्रोजेक्टेड ग्राउंड आगे चलते हुए उसी पे अपना लैंडर मॉड्यूल अभी तक आगे चलते हुए देखा जा सकता है कि लैंडर मॉड्यूल लगभग देखा जा सकता है 370 लैंडर मॉड्यूल लगभग दिशा में चल चुका है 370 किलोमीटर 36 दिशा में चल चुका है। The mission operations team is analyzing the data. The mission operations team is analyzing the data. We can all see the seriousness and the concentration with which each and every parameter of the lander module is being analyzed. Each and every parameter of the lander module is being analyzed. The performance so far seems to be nominal. The performance so far seems to be nominal. चूंकि एलएस एक्टिवेट किया जा चुका है इसलिए ग्राउंड से कोई एलएस एक्टिवेट किया जा चुका है इस दौरान ग्राउंड से कोई कमांडिंग नहीं की जा रही है। इसरो के इस दौरान आपके स्क्रीन पे रियल टाइम में आ रहा है इसरो के डीप स्पेस मिशन में से रियल टाइम में थर्ड ऑर्डर गाइडेंस पॉलिनोमियल का प्रयोग हुआ है। सेकंड और थर्ड ऑर्डर की इनर्शियल गाइडेंस पॉलिनोमियल का प्रयोग हुआ है हमेशा सुनिश्चित इनर्शियल थ्रस्ट और एंगल के हमेशा सुनिश्चित करेगा। During the entire descent, there is no ground intervention. During the entire ALS has taken charge. No ground intervention. The preparation for today's event had started nearly 48 hours before. For today's event had started nearly 48 hours before. Parameters, wherein various pre-selections we can see that the vertical velocity, or we can see that the vertical has been brought down of the lander module coming down has been brought down. It is continuously coming down. And the ALS had already been initiated 1 hour before the scheduled time of the power descent started. 1 hour before the scheduled time of the power descent started. Engine electronics module, the throttleable engine and lander was oriented module. The tech favorable attitude and lander was oriented to the favorable attitude. देख सकते हैं कि लैंडर
आप अपनी शुरुआत में देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल जिसकी शुरुआत में लगभग 1150 मीटर पर लगभग जो 1150 बहुत ही मैजेस्टिक शुरुआत कही जा सकती है, जो कि एक बहुत ही मैजेस्टिक शुरुआत कही जा सकती है इस रफ ब्रेकिंग फेज के लिए। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूं कि आप अपने स्क्रीन यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूं कि आप लैंडर मॉड्यूल का आल्टीट्यूड धीरे धीरे अब कम होता हुआ लैंडर मॉड्यूल का जो कि धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिख रहा है और करंट आल्टीट्यूड भी है तो जो कि 28.6 किलोमीटर करंट आल्टीट्यूड है तो जो कि 28.6 किलोमीटर के आसपास है। Chandrayaan 3 lander imager display है. The lander imager is continuously giving the lander imager is photographs of the moon surface and that is also being streamed photographs of the moon surface. Currently the horizontal velocity streamed here. Currently the horizontal velocity and the distance traveled has been brought down 574 kilometers. The distance traveled is the current altitude 577 kilometers as can be the current altitude on the screen is 27 kilometers as can be seen on the screen. करीब करीब अपने आधे सफर को पूरा करते हुए करीब ब्रेकिंग फेज में अपने आधे सफर को आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी ऊंचाई लैंडर बहुत ही आगे की तरफ अगर बात करें अपनी ऊंचाई की घटा रहा है। चंद्रमा के सतह से करें लगभग लैंडर की ऊंचाई नीचे चंद्रमा के सतह से करीब लगभग 27 किलोमीटर से नीचे हो के आसपास है, करीब करीब 26.7 किलोमीटर के आसपास है। The next phase after the rough braking phase is the attitude phase. After the rough braking phase for a duration of nearly 10 seconds, which will the lander will be oriented such that both the altimeters will be oriented towards the moon surface. Both the altimeters will be at the end of exactly towards attitude surface. Height measurement update to navigation system will be given from the laser and carb navigation system will be given. Currently we are in the middle of the rough braking phase. Currently we are in the middle of the rough braking phase. अगर हम ध्यान से देखें तो लगभग 8 मिनट की यात्रा ध्यान से देखें तो लगभग लैंडर 8 मिनट की यात्रा के बाद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम करते हुए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को अभी लगातार कम करते हुए 24 किलोमीटर ऊंचाई प्राप्त अभी की ऊंचाई के समय 24 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। अब तक के आंकड़े को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लैंडिंग अब तक के आंकड़े को देखते हुए नामिनल कह सकते हैं कि यहाँ पर हम देख सकते पूरी तरह से नामिनल है। हॉरिजॉन्टल यहाँ पर हम लगातार हैं कम होती हुई दिख रही है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगातार कम होती हुई दिख रही है। I'm confident that we can go far together and I'm looking forward to making meaningful partnerships on the sidelines of this event. Thank you very much. The altitude of lander from ground is currently 12 km. The altitude of lander is currently 22 km, which is again going currently 22 coming down, and that again going to be coming down, and that for the viewers who have joined now. We are in the viewers who have joined now power descent phase and we are in the rough braking phase which is the power descent phase of the power and we are in the rough braking phase which is currently traveled a downrange of 697 we have currently traveled a downrange of 697 kilometers. The downrange that has to be traveled during this phase is 713.5 that has to be traveled during this phase is 713.5 kilometers. कि लैंडर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगभग 700 की लैंडर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगभग 700 लगभग 20 मीटर प्रति सेकंड हो गई। 900 लगभग मीटर पर सेकंड हमें कह सकते हैं वेलोसिटी को कम किया जा चुका है। मीटर पर सेकंड वेलोसिटी को कम किया जा चुका है। At the same time, we can see the altitude of the lander is just at the same time we can see the altitude of the lander is just 17 moon surface 17.8 which is going to be from the around 7.4 at the end of the rough braking phase around 7.4 at the end of the rough braking phase. इस फेज के बाद हम जाएंगे towards फेज के बाद हम जाएंगे towards the attitude we will be expecting sensor update from the laser where we will be expecting sensor update from the laser and car band altimeters. We can see the visualization of the lander module. We can see the visualization of the lander module surface. The current altitude is nearly 15.2 kilometers. The current altitude and the distance traveled is 754 kilometers. And the distance traveled is 754 that the lander imager camera we can also see the image that the lander imager camera has been providing. ब्रेकिंग फेज के दौरान
800 न्यूटन के चारों थ्रोटल इंजन के दौरान कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं, अपने कार्य को पूरी तरह लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम कर रहे हैं, लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम कर रहे हैं। अब तक लैंडर लगभग 75 से 80% की यात्रा को पूरा कर चुका है, 75 से 80% की यात्रा को पूरा कर चुका है। After the rough braking and the attitude hold phase, we shall be having the fine braking and the attitude hold phase. Continue for nearly having the fine braking phase, which will continue for nearly 3 minutes. The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer. The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer, and there is no intervention from ground. जी हाँ आरुषि, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं। जी हाँ आरुषि, अभी आप अपनी जो करंट आल्टीट्यूड है कि चंद्रमा के सतह से, जो करंट आल्टीट्यूड है 10 किलोमीटर चंद्रमा के सतह से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास। हम अपने जी हाँ हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हाँ हमारे का उत्साहवर्धन करने के लिए नरेंद्र मोदी जी अफ्रीका के सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जोहानसबर्ग से जुड़ गए हैं। Just giving us as much information in the image and the processing that we can. With this, we can plan perfectly what is the situation of the disasters. In the navigation yes, we are privileged to have with us Honorable Prime Minister of India, to have with Narendra Modi ji, Honorable Prime Minister from South Africa's Narendra Modi ji, to encourage us. Has joined us from South Africa's Johannesburg to encourage us. जी हाँ, आप ये देख सकते हैं एल्टीट्यूड होल्ड फेज भी आप ये देख सकते हैं आसानी से भी लैंडर फेज ने पार कर लिया है, आसानी से ब्रेकिंग लैंडर फेज ने पार कर लिया है हो चुकी है और अब फाइन भी हम ये देख सकते हैं शुरुआत हो चुकी है। लैंडर की ऊंचाई देख सकते हैं लगभग 5.6 किलोमीटर है, ऊंचाई जो कि लगभग 5.6 किलोमीटर है, लगभग जो 800 मीटर फेज के उपरांत लगभग 800 मीटर हो जाएगी। We can hear from the mission operations team that the sensors are performing mission operations team that the sensors we are currently in the midst of the fine braking phase, which is going to continue for in the midst of the fine braking phase, which is going to be reduced 3 minutes to nearly 800 meters at the end of this phase. To nearly 800 meters at the end of this phase. ने बताया कि लगभग 3 मिनट के उपरांत आरुषि जी ने बताया लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली लैंडर की हाइट और यहाँ पे 800 मीटर लैंडर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी लैंडर की हॉरिजॉन्टल रेंज भी लगभग वर्टिकल वेलोसिटी इवन डाउन रेंज भी लगभग शून्य होगा। We can see the visual of the lander module and we can see that the down range traveled of the lander module 831 down range traveled is nearly 831 kilometers. Around Atlantis and images around the Earth. We come from the astrophysics. That's our DNA. We come from watching stars, you know. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई आप अपनी चंद्रमा की सतह से लगभग कि लैंडर की ऊंचाई कम हो चुकी है। अब चंद्रमा की सतह से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है। We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers as we can see. That is able to work in different spectral bands and able to work with its dimensions with small satellites thanks to the hardware and to the software designed by Atlantis. Now we're providing full Earth observation solutions built around the core of the mission, the brain of the mission. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अभी आप देख सकते हैं 1 किलोमीटर के आसपास है, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। We are 100 employees company right now, combination of private and public shareholders. We are nearing the final phase of the power descent. The final phase is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase or the local navigation phase. जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेज के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं, करीब आ चुके हैं। हाँ, हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक तीसरे चरण को लिया है, बहुत ही और
सफलतापूर्वक वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं और शुरुआत भी अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। Lot of applause indicates that till now the performance has been nominal. Till now we are in the vertical descent phase 1. We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters. The altitude is being brought down from 800 and approaching the lunar surface. And we are nearing and approaching the lunar surface. आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर क्या आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग लगातार कम होता जा रहा है और इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट 600 मीटर के आसपास और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर फेज के दौरान लगभग 150 मीटर फेज के दौरान ऊंचाई पे लगभग 150 मीटर के लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity, the horizontal as well as the vertical velocity is now being and the lander module has begun its descent towards the landing site. And the lander module has begun its descent towards the landing site. Thank you very much. Shukriya. Thank you very much to you, sir. And now from PLD Space Spain, may I invite Mr. Rao. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है स्क्रीन पे देख लैंडर पूरी तरह से उसी को पथ निर्धारित फॉलो कर रहा है। लैंडर पूरी तरह से उसी को लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अब हमें देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं कि हम चंद्रमा के सतह 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह पे। We are approaching the vertical descent phase approaching which will have the lander module phase at nearly 150 have the lander module hovering above the lunar surface 150 meters above the lunar surface जो कि सेकंड हायोरिक गड़गड़ाहट कंप्लीट होने के बाद जो कि सेकंड हायोरिक फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड जी हाँ कम होता जा रहा है। ध्यान से अभी हम लोग एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है की ऊंचाई। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation that are updating at this point of the landing site are providing confirmation of the safety of the landing site. Going on. As a very good signature, retargeting is going on, and this is a very good signature. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई आप ये देख सकते हैं 65 मीटर के आसपास। लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only 2 engines are now being fired. Only 2 engines we are nearly at being fired. Zero velocity, and we are nearly at zero velocity, and now we are approaching the moon surface. We were hovering, and now we are approaching the moon surface. लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है। लैंडर हम अब लगभग 50 मीटर कम किया जा रहा है, कम आ चुके हैं। और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi. We can see the Honorable Prime Minister to encourage Narendra Modi ji, and he is critically looking at the visuals. He is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. Let us all wait. People are applauding. From the Secretary Department of Space and Chairman ISRO. From the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्ट लैंडर चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। सेफली और सॉफ्ट हम लोग चंद्रमा की सतह पे लैंड गर्व की बात है। ये हम लोगों में कहावत है, बहुत ही गर्व की बात दूर के हिंदी में कहावत है कि चंदा मामा दूर के अपने, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. The hard work of the entire ISRO community has come to fruition.
आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, sir, we have achieved, नमस्कार, soft landing on the moon. India, sir, we have achieved the moon. Soft landing on the moon. India is on the moon, sir. Sir, I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. Our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, अपनी आंखों के सामने, जब हम अपनी आंखों के सामने इतिहास बनते हुए देखते हैं, तो जीवन धन्य हो जाए. ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं की चिरंजीव चेतना बन जाती, चिरंजीव ये चेतना बन जाती. अविस्मरणीय पल, अविस्मरणीय, अभूतपूर्व है. ये क्षण अभूतपूर्व है. विकसित भारत के शंखनाद का है. नए भारत के जयघोष का, नए भारत के जयघोष का, मुश्किलों के महासागर को पार करने का, जीत के क्षण चंद्र पथ पर चलने का है. चंद्र पथ पर चलने का है. 140 करोड़ धड़कनों के 40 करोड़ सामर्थ्य का है. धड़कनों के ये क्षण सामर्थ्य का है. भारत में ये क्षण नई ऊर्जा, भारत में नया विश्वास, नई ऊर्जा, नई चेतना, नया विश्वास, नई चेतना का है. भारत के उदयमान, भारत के आह्वान, भाग्य के आह्वान काल की प्रथम प्रभा में, अमृत काल की सफलता की अमृत वर्षा हुई है. सफलता की ये अमृत वर्षा धरती पर संकल्प लिया, धरती पर और चांद पर उसे साकार, और चांद पर उसे साकार. वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून. अंतरिक्ष में आज हम नए भारत की नई उड़ान के, नए भारत की नई उड़ान के साथियों साक्षी बने. मैं इस समय साथियों ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए समिट में दक्षिण अफ्रीका लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूँ. हर देशवासी की तरह, लेकिन मेरा देशवासी की तरह चंद्रयान महाअभियान भी लगा. चंद्रयान महाअभियान पर भी नया इतिहास बनते ही, नया इतिहास बनते ही जश्न में डूब गया. जश्न में डूब गया है. उत्सव शुरू हो गया. हर घर में उत्सव शुरू हो गया है. मैं भी हृदय से अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ से जुड़ा हुआ हूँ. इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ चंद्रयान को, मैं टीम चंद्रयान को और देश के सभी वैज्ञानिकों को और देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं. जिन्होंने बहुत बधाई देता इस पल के लिए, जिन्होंने वर्षों तक इतना परिश्रम किया, वर्षों तक इतना परिश्रम किया. उमंग, आनंद और भावुकता से भरे, आनंद और भावुक पल के भरे मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी, मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी बधाइयां देता हूं. कोटि कोटि बधाइयां देता हूं. हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम, भारत और प्रतिभा से चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के उस दक्षिणी जहां आज तक
दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से अब आज के बाद जुड़े मिथक बदल जाएंगे, मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे, कहावतें भी बदल जाएंगी, कहावतें भी बदल जाएंगी। तो हम सभी लोग भारत में तो हम धरती को हम सभी लोग कहते हैं, धरती को चांद को माँ कहते, मामा बुलाते हैं, और चांद को कभी कहा जाता था चंदा, कभी कहा जाता था बहुत दूर के, चंदा मामा बहुत दूर के हैं, बहुत दूर के चंदा मामा। अब एक दिन वो भी आएगा, अब एक दिन वो भी आएगा, कहा करेंगे चंदा मामा करेंगे, बस चंदा मामा है, बस एक टूर के है। ऑन दिस जॉयस ओकेजन, on this joyous occasion, I would like to address all the people of every country and region, the people of every country and India's successful moon mission. India's successful moon mission alone. It's not just India's alone. Year in which this is a year the world is witnessing, in which India's world is witnessing India's our approach of one earth, our approach of one family, one earth, one future, one family is resonating, one future across the globe is resonating. This human-centric approach, this human-centric approach, and that we represent, had been, and that we represent, welcome, had been universally, welcome, our moon mission is also based on the same human-centric based on the same human-centric approach. This success, therefore, belongs to this success. All of humanity belongs to all of humanity. It will help. You can see moon missions. It will help by other countries. Moon missions in the future. By other countries, I am confident that all countries in the world, that all countries in the world, those from the global south, are capable of achieving such are capable of achieving. We can all aspire for the moon. We can all aspire and beyond. For the moon, मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान के ये उपलब्धि, चंद्रयान महाअभियान के ये उड़ान को, चंद्रमा की उड़ान को से आगे जाएगी, चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हमारे सौर मंडल की सीमाओं का, हमारे सौर मंडल पर सीमाओं का और मानव परखेंगे, ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को, ब्रह्मांड की साकार करने के लिए भी जरूर काम करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। भविष्य के लिए हमने कई बड़े के लिए और महत्वाकांक्षी बड़े लक्ष्य तय किए और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए। सूर्य के जल्द ही अध्ययन के लिए, सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा, आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा। शुक्र भी इसके बाद इसरो के लक्ष्यों में से एक है। इसरो के लक्ष्यों में गगनयान के जरिए, गगनयान के जरिए ह्यूमन स्पेस फ्लाइट पहले भी ह्यूमन स्पेस पूरी तैयारी के साथ जुटा है, पूरी तैयारी के साथ जुटा है। बार बार ये साबित कर रहा है, बार बार ये साबित कर रहा है द लिमिट,
Sky is not the limit. साइंस और टेक्नोलॉजी साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी भविष्य का आधार है, देश के उज्ज्वल भविष्य का आधार है। आज के इस दिन को इसलिए आज के इस दिन हमेशा हमेशा के लिए याद रखें, हमेशा हमेशा के लिए याद रखें। हम सभी को यह दिन एक उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए भविष्य की ओर बढ़ने के दिन हमें करें। अपने संकल्प दिन हमें सिद्धि का रास्ता, अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाए। इस बात का प्रतीक है ये दिन कि हार से सबक लेकर कि हार कैसे सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। देश के सभी वैज्ञानिकों को, देश के सभी वैज्ञानिकों को और बहुत बहुत बधाई, ढेरों भविष्य कामनाएं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। For being part of our journey to this success, and let me take this opportunity to success, and let me take this opportunity this mission. To thank the project director of Chandrayan 3. This mission, he is here. The project director of Chandrayan 3, Vikram is here. Congratulations to you. Vikram, congratulations to you. The associate mission director, Kalpana, and the mission operations director, and the satellite was built at your house athlete center, Shankaran, the satellite was built at your house athlete center, Shankaran, the director. It's a great moment of happiness on behalf of team. It's a great moment of happiness, satisfaction on achieving this goal as a project director of this mission. On achieving this goal as a project director of this mission, the entire mission operations right from launch till landing happened flawlessly as per the timeline till landing, and we became the first country as per the timeline to demonstrate the soft landing onto the moon surface. To land, we became the first country to soft landing onto the moon surface, near to the south pole of the moon. We became the first country to go to the near to the south pole of the moon. I take this opportunity to thank navigation guidance and control team. I take this opportunity to thank navigation guidance and all the mainframe subsystem team who have brought success to this mission. And all the mainframe subsystem team who have brought success to this mission. Operations review committee. I also take the opportunity to thank the critical operations review committee for thoroughly reviewing the mission operations right from spot launch till because of the review process. Target was on spot because of the review process. I also thank the ISRO higher management. Right from Chairman I also thank the ISRO higher management, right from Chairman ISRO, Director URC, and all the center directors and Chandrayaan 3 project executives, and finally my thanks to the Chandrayaan 3 project executives spread across the ISRO centers. Thank you. Mission Director Srikanth. It gives me immense pleasure to be part of Chandrayaan 3 and acting as mission director. To be part of Chandrayaan 3, I would like to thank each and every director, team member. I would like to thank each and every team member who has supported in carrying out all the mission operations flawlessly. I would like to thank my senior management, Chairman ISRO. I would like to thank my senior management, Chairman ISRO, and URC, my senior carrying out and supporting all the members things in a carrying out in proper way. Supporting all the things in a carrying out in proper way. Thank you very much. Associate Project Director Kalpana. Associate Project Director Kalpana. This will remain the most memorable and the happiest moment for all of us for our team Chandrayaan 3. Memorable and the happiest moment for all of us for our team Chandrayaan 3. We have achieved our goal flawlessly. From the day we started our goal flawlessly after Chandrayaan, from the day we started rebuilding our breathe in, breathe out Chandrayaan for our teams.
It has been breathe in, breathe out Chandrayaan 3 for our team to all the special tests and the simulations from the conducted meticulously. all the special this tests has been possible only because of our immense effort from our has been possible only because of our immense effort from our Chandrayaan 3 team. The guidance and of course with the guidance from our chairman ISRO, our directors and all the guidance from our chairman ISRO, our directors and all our experts. One and all. Thank you for all the minutest help which has been provided from all the areas all the minutest help which has been provided from all the areas of departments. Thank you. Thank you. Chandrayaan 3 is the result of the work done by Chandrayaan 3 is the result of the work done by thousands of support team across ISRO and other places, other institutions. Support team across ISRO and other places has been the lead of the center, which has been the integrated all of these efforts of the center, which integrated all of these efforts to speak on behalf of all of you. So I request him to speak on behalf of all of you. Thank you very much for the affection that has been displayed today. Thank you very much for the affection today that has been displayed today. We have achieved what we set out to achieve in 2019. We have achieved what we set out to achieve in 2019, but we have done it. It was delayed by about 4 years. When but we have done it. Was launched. When Chandrayaan 3 was after the launch separation of the spacecraft from launch vehicle, I said separation of the spacecraft from launch vehicle. I said. After the soft landing, so the rest of the here I will take after the soft landing couple of minutes to tell. So here I will take couple of minutes tremendous to tell amount of effort that has been tremendous amount of effort by the entire project team. When I say project team, it is not just by the entire project team. When I say project team, it is not just only director. Of course, they are the face of the project, and they have been project director. Of course, they are the face of the project. Sleeping, eating, breathing. Chandrayaan for the last 4 years, eating, breathing, Chandrayaan for the last 4 years. Such a large number of people. They have been supported by, particularly in such a large number of navigation, particularly in guidance and navigation area, propulsion guidance and control area, propulsion system. Effort that has been put by this people, area, the number of simulations that has been put by people, the number of reviews they have done, the amount of criticism, the number of reviews they have gone through. And the amount of criticism overcome that they faced, it is and overcome that. As a person who has been watching this for the last 4 years, been watching this for the last 4 years, along with them, goes out for them. My heart amount of effort, my heart goes out tremendous. For them. The amount of effort, that is what ISRO is all tremendous. About. That is what our ISRO is all about. Taught us to do. Now today this success taught us to do. Has now today put us even more higher responsibility, as the Honorable Prime Minister was telling, even more higher responsibility as the Honorable Prime Minister so was telling, because we have set the bar now, nothing so less than, nothing less spectacular than this is going to be, nothing less spectacular than any of us in the future. Is going to be so as inspiring for any of us in the future. We will be now the Honorable Prime Minister mentioned space. We will be now looking at putting the man in Venus, putting and landing aircraft around Mars, Venus, and landing all these activities are going on for few years. All these activities are going on. This success today, few years, will inspire us, and this success today take those efforts, will inspire us. And will even more strongly take those efforts, so that we will make even our country proud again so and again and again. We will make our country proud. Thank you very much for again and every one of you who have directly or indirectly participated in this mission, who have directly or indirectly participated in this mission, intentionally or unintentionally helped us. Intentionally or unintentionally, all for every one of you. In all, a big thank you because for every one of you. Even thank you because casual remark, an unintended point, casual remark, an unintended a person who is striving to reach a goal. A person who is making that remark may not have meant it that way. The person who is making that remark may not have meant it that way. I said sometimes that even unintended help. That's why I said that even
even unintended help very welcome, and we are very thankful. Very welcome, and we are very thankful for supporting all of us. The amount of affection we received, supporting all of us. The amount of affection I final stage. The number of people who gave us confidence stage, that the number of people go wrong gave us confidence. This is going to be successful. Can go wrong. And in fact, I was not going to be successful. That much confident because in fact I was not couple of times that much confident because I know very well as a person who has been doing in this. I know very well as a person who has been doing in this. There are thousands of things. Any of that could I know can anytime go wrong. There are thousands of things, but any of that could so many anytime go wrong and derail. That I only see as so many of the effort we have put. That I only see as the reflection. So happy to see this effort, and they want us to succeed. So happy to see this effort, and they want us to succeed. We are going to succeed. It is not that want us to succeed. They know that we are going to succeed. The people want us to succeed. Love and affection. So thank you very much for continue to everyone do our best love and affection and make our flag continue to ISRO's as do our best flag fly high and make our thank you very much. ISRO's as far as India's flag fly high. Thank you very much. Honorable Prime Minister called me, Honorable Prime Minister called me, each one of you, and conveyed your family greetings to each one of you in ISRO. You and your family for the wonderful work you did in ISRO. To him for the support that he is giving to us. For missions like Chandrayaan that he is giving to us. The missions that are in the offing. I think that's a great word. The missions that are in the offing that we are receiving great word pursuing the inspirational work that we are receiving for the nation. Pursuing I want to tell you inspirational work. And I want to thank you also for each and everyone who prayed with us. And I want to thank you also for each and everyone who prayed with us. Wanted this success to happen in ISRO. I thank all those people to happen all around the country. I thank all those people beyond the country all around the country blessings and wishes and beyond the country affection that he has given to each one of us and wishes and for last so many years that he has given to each one of us for doing this work for last so many years. People who have been standing with us, especially the name of Kiran Kumar sir, who have been standing with us, especially the name of Kiran Kumar sir and Mr. Kamalakar and Mr. Kamalakar, Koteshwar Rao. They have been helping so much. They were part of the team, help them to so much get the confidence. They were part of the team, the reviews help them to ensure that nothing goes get the confidence with any mistakes. To ensure that nothing goes with any mistakes. And of course, this is not the work of us alone. This is a work of and of course, this is not the work of us alone. This is a work of a generation. This is a journey we started in Chandrayaan 1, continued in Chandrayaan 2. This is a journey we started in Chandrayaan 1. Craft is still working, continued in Chandrayaan 2. A lot of communication work with us is still working. All the team that contributed to communication work with us and Chandrayaan 2 should be remembered that contributed to building Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 should be remembered and incremental progress and definitely a great, huge one it is. And thank you so much for all the support and work that you have done it is. And thank you so much for all the support and work that you have done. Centum Electronics Private Limited, One Web India Private Limited, Ananta Technologies Private Limited. After that we have Skyboot Aerospace Private Limited and then Electrics Aerospace Private Limited. I request the esteemed presenters, the delegates from Bharat Heavy Electricals Limited, CMTI, Nidhani, Centum Electronics and One Web India Private Limited. Please stay close to the podium. And now may I invite Bharat Heavy Electricals Limited to kindly join us at the podium for their presentation. Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, from Bharat Heavy Electricals Limited is going to be making his presentation. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you for giving us opportunity to speak here. And I represent BHEL, Bharat Heavy Electricals Limited. It's a power plant manufacturer company. We are specialized in thermal, nuclear, hydro and solar power plants among others. And our interaction with ISRO for almost now 2.5 decades. And we have mainly focused on two major products because we are in the power sector
So we also provide power to the satellites. Now, as you know, when the satellite goes into the space, its main and only source of energy is the sun. Now the sun's energy is captured by the solar panels, and these solar panels consist of solar cells, which are basically multi-junction solar cells, which are basically triple junction solar cells or multi-junction solar cells with gallium arsenide kind of materials. And these are all made into the forms of panels, and you can see the panel which is there on the left-hand side. And we can able to make maximum up to 6.93 square meters of the panels. And it has all been used in the ISRO satellites which have been launched as of now. We also make batteries. These are the once the power from the sun is captured by the solar panels, it goes into the battery to store it there, and then this battery energy will be used when the eclipse times comes. And BHEL ISRO has been working together since 2002 on making the batteries. We started the nickel cadmium and nickel hydrogen batteries, and from 2010 onwards we have been making lithium-ion batteries. As of now, we have made 107 batteries and supplied to ISRO, and including 82 batteries of lithium-ion. And the battery which is being used for many of their satellite applications, including the Chandrayaan 3, which is going to be launched a week from now. Besides the the panels and batteries, we have also gone to backward integration. We have gone to their sister unit Vikram Space Center and acquired the technology of lithium-ion cell manufacturing. And this technology, it is an indigenous technology developed by VSSC, and we have taken the technology and established the process and established the product and qualified the product for space applications. So we are the first company beyond ISRO is to produce the space grade batteries or the space grade cells in India. And so we will be very happy. And besides the ISRO customer, we are started catering to the non-ISRO customers. One of our major customer right now is the Dhruv Aerospace. We have been supplying the space grade panels to them. And I invite other people, other startup companies all over the world, if anybody interested to take our assistance from BHEL through InSpace, we can able to help you in this endeavors also. Thank you very much for giving us an opportunity to speak in front of all of you. Thank you. Thank you very much, Mr. Satpathy. And with that, ladies and gentlemen, from Central Manufacturing Technology Institute, CMTI, may I invite Mr. Mohan Raj. So good afternoon, ladies and gentlemen, and a big thank you for the opportunity to brief about Central Manufacturing Technology Institute, or CMTI for short. CMTI is a R&D institute located in Bangalore, and we operate under the administrative control of Ministry of Heavy Industry, and our domain expertise is in the manufacturing technology. And what we do is help the Indian industries. We collaborate with the Indian industries to resolve technology gaps in their area of operation, and then also come up with technology solutions for them, which they can commercialize. A brief canvas of our operation is depicted here. Mainly about our area of operation is mainly about advanced manufacturing technology, which includes, apart from complex manufacturing, micro and nano manufacturing, digital manufacturing, additive manufacturing, smart manufacturing, and so on. We also have a host of laboratories, state-of-the-art laboratories at CMTI, which provide services to industries in the area of sensors and vision. It could be in the area of hydraulics, etc. One of the main areas of our services to the industry is about special product development. And in this regard, I would like to brief you about the product that we've been supplying to ISRO for the past 20 years, and this is the vertical planetary mixer for propellant processing. And we have the technology for sizes from 250 liters, 250 kg to about 10 tons. Currently, we are building the 10-ton capacity vertical planetary mixer for ISRO, and shortly it should be in service. Apart from this, we also make continuous mixers
Okay, which we okay. supply for the Okay. same purpose for the manufacture of propellant. Okay, okay. And these we have in the pilot capacities of 30 kg per hour. Okay. And apart from this, for the space program, Okay. we also supply diamond turning machines and hard turning machines, which we use to make space mirrors. So these are a sample of some of the products that we have supplied to the space program so far. So aside from the products, we also have excellent labs, state-of-the-art labs, which I was mentioning earlier. That is about the sensors and vision technology. We also have labs for the smart manufacturing and then the nano manufacturing. I invite all the space industries here, present here, to come visit CMTI so that you are Whether aware he's of the going to facilities join available in at the Bengaluru beginning only. and Whether probably he's could going be to used join to at the beginning for only. your own At manufacturing 5:20 is he purposes. going to Thank join? you for the opportunity. Okay. Okay. Thank you very much, sir. And from Okay. Midhani, may I invite Mr. P. Babu. Okay. 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 Good afternoon. Thanks for the opportunity. I'm from Midhani. Midhani is a public sector enterprises under Ministry of Defense. This is a 50 years old company. And last 40 years, we are manufacturing and supplying special metals and alloys. Mainly, we are the only manufacturer in India of titanium alloys and major manufacturer nickel alloys. And we manufacture special metals and alloys and supplying to mainly space, defense, nuclear and commercial sector. These are the major strategic program Midhani supplies. So presently we have two places. Main place is at Hyderabad, Telangana state, and one more plant we have at Rohtak near Delhi, Haryana, where we manufacture armor product. We manufacture, these are the major category of alloys, super alloys, titanium alloys and special steel. And we have a different type of melting facilities like primary melting, secondary melting. That includes vacuum induction melting, vacuum arc remelting, electro slag remelting. These are the specialized melting process used to manufacture special metals and alloys which can be used in a critical and strategic application. This is the dedicated titanium manufacturing facility we have from titanium sponge. Then the ingot is made from there. Then we go for forging, hot rolling, cold rolling, wire drawing, white plate and casting manufacturing, all the facility we are having. These are the two hydraulic forge press we have, 1500 ton and 6500 ton. And hot rolling facility we are having to make bars, rounds and flats. And cold rolling also we can make up to 0.5 millimeter thickness. And we have a dedicated investment casting facility where we made all the castings required by space. And last 4 decades we are supporting space in supplying special steel like Maharajing steel and investment casting, plates, rings. And we also make fasteners and bio implants. Armoring plant, dedicated one, and whatever personal armoring, vehicle armoring we make. And apart from space, means we are supporting to the Army, Air Force, nuclear power plants and other strategic sector. We have a dedicated facility for chemical, mechanical. One is male voice in Hindi. Now you please female voice in English. One is male voice in Hindi. And you just in English tell them what the instruction comes and you just tell two voices instruction. After that only you will go back to the two voices will be there. After that only you will go back to the. Now please tell them how you will instruct and then they will tell what they are going to how you will instruct. After that it will be cut. And then they will tell what they are going to talk. Skull melting After that furnace which can manufacture titanium casting weighing up to 200 ton, 200 kg. And we got spring mill. Okay, you tell the same thing to both of them. Now presently we you tell the made same one thing white to both plate of mill which can manufacture 3 meter width and 15 meter length. Thanks for the opportunity. Thank you very much. Thank you very much, sir. From Centum Electronics Private Limited, we have Mr. Vinod.
लेकिन उसको आप but that video you have to stop at certain लेकिन point उसको आप so that it can be taken video you have to stop at certain point no so that it can be taken okay okay good evening thank you G20 SELM organizers for giving me an opportunity to present about Centum space journey and also thank you for enabling some of the delegates to make a visit to Centum industry and understand a typical case study of Indian industry groomed by ISRO. Start the video. Quickly, Centum has been a 30-year-old company. Our space journey has been about 23 years out of those 30. We are an Indian multinational company that way with established footprints in different parts of Europe, doing high reliability, high technology. And the space journey basically started catering to various customers, primarily ISRO in India, but these are list of our customers. And to this, we are all now latest is we are partnering with Indra of Spain on the space radar opportunity. These are our key customers. And we have been working with Indian Space Research Organization since 2000, and the journey is something like this. And if you see it from the left bottom, from a typical component to right up to payload modules and subsystems, that has been the progression. An excellent case of how ISRO has taught us handheld and then typical Indian industry to move from components to modules to subsystems to systems with multiple domains starting from analog, power, digital, and today everything is multidisciplinary. And also the technology platforms have increased right from microelectronics to box assemblies to RF subsystems, various technologies which are otherwise used in latest upstream space technology is something what you will be able to see. And all of this has been done in turnkey mode where we design, we deliver, we buy the components. We're also working right now on the new space area where there is a paradigm shift happening in various domains, right from selection of components to the designs to the speed versus the cost effectiveness. And that is something which we are parallelly working in parallel with the traditional space domain. The subsystems, this is how the payloads have been. Payloads comprising of electronic warfare, mini synthetic aperture radar right up to Ku band, onboard computers, and the hyperspectral electronics for the hyperspectral payload camera. This is how the progression has been. The natural step is to move towards the small satellites. That's the need of the hour as far as Indian ecosystem is concerned. And Centum is no exception, and we are getting ready to develop and manufacture the satellites, hopefully with ISRO, with various other customers, various other end users. That has been the trend. So net, 22 years of credible space history, build to spec, build to print, both modes of engagement. We have about 80% of it is export, so there is a good amount of national, international domain expertise, strong design, engineering, and manufacturing infrastructure meeting global and Indian space standards. That is Centum for you. Thank you. Thank you very much, sir. And now, before I invite the next presenter, the next order will be Anant Technologies Private Limited. I request you to please stay closer to the podium. Skyroot Aerospace Private Limited, Bellatrix Aerospace Private Limited, Hughes Communications India, and Inox India Limited. And with that, let me now invite from OneWeb India Private Limited, Ms. Nishtha Kapoor. Introducing OneWeb. के निश्चितता और दारुसा के बीच अगर मैं सही मायने में कहूँ तो धन्यवाद दारुसा कोई भी अगर मैं सही मायने में कहूँ तो किसी भी देश के द्वारा कोई मिशन रहा हो और चाहे किसी भी देश के द्वारा संचालित किया और अनिश्चितता के बीच बहुत ही महीन अंतर होता है और अनिश्चितता के बीच बहुत ही महीन अंतर होता है जिसकी लेकिन सफलता हम यहाँ से होता ना हमारे लेकिन करके सुधारते हुए आज पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि सुधारते लैंड मॉड्यूल पूरी तरह से आश्वस्त पे चंद्रमा की सतह पर लैंड मॉड्यूल सॉफ्ट लैंडिंग तौर पे चंद्रमा की सतह पर सभी दर्शकों की जानकारी के लिए अब हम इसरो के सभी दर्शकों की जानकारी के लिए अब हम इसरो के प्रस्तुत करेंगे सभी लूनर मिशन इसरो का पहला मून मिशन प्रस्तुत चंद्रयान 1 अक्टूबर 2008 पहला मून पीएसएलवी रॉकेट के द्वारा सफलतापूर्वक 2008 में किया गया पीएसएलवी रॉकेट के द्वारा सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज करके
पहले we ही have चंद्रमा के actually सतह पर customer पानी who are की very खोज है happy कि using पहले our ही विश्व services. के तमाम So अंतरिक्ष while वैज्ञानिक है कि we और are, स्पेस एजेंसियां still विश्व के connecting तमाम our अंतरिक्ष customers, we वैज्ञानिक से started जानने और getting स्पेस the एजेंसियां opportunity. नहीं है। So please अगर look हम at और this करें as a चंद्रयान के लिए which दो you की fit दिख in रहे हैं and जो good इसरो in का the दूसरा the मून है best चंद्रयान collaborate जुलाई with us 2019 में and इसरो this का context. दूसरा मून सबसे ताकतवर While जुलाई start, I 2019 द्वारा said, and I इसरो will के end सबसे with this, ताकतवर that we रॉकेट are in LBM the 3 journey द्वारा of भी लगभग 4 transforming साल बाद humanity, and why I चंद्रमा say के that? 100 Because for किलोमीटर के every सर्कुलर person ऑर्बिट में connected, there is चंद्रमा one के not 100 connected. For किलोमीटर every वाली school सर्कुलर ऑर्बिट connected, में there दान are करते हुए hundreds which are not मिशन के connected. प्रारंभ में For इसका डेटा every 1 साल disaster निर्धारित की गई थी मिशन के there were प्रारंभ में chances LBM द्वारा that 1 for a साल quick निर्धारित and सटीक effective इंजेक्शन response, for और every LBM security की breach वजह से happen at the चंद्रयान border, 2 there was a काफी soldier लंबे समय like तक that कार्यरत connected. रहेगा। And for चंद्रयान every 2 काफी farmer लंबे समय or तक a कार्यरत business रहेगा। failed सभी to भागों का predict the चित्र weather, चंद्रयान 2 इस चंद्रमा they को could लगभग have सभी achieved भागों more. का चित्र And ले last जाता but है not the least, यानी कि एक for बहुत बड़ा every महत्वपूर्ण life we पेलोड had कैरियर lost चार्ज because थी there was विश्व no का doctor सैनिक in the ऑर्बिटर village. रहा है हाई Here, रिजोल्यूशन जो we कैमरा as a चंद्रमा के privileged सतह का part of the लगातार बड़ा है society इस go रहा back है जो to the कि society चंद्रमा and के to the समय का humanity. लगातार Thank निवेदन you so करूंगा much कि indeed. वो आप लोगों को मैं आपके उसी चीज में निवेदन करूंगा चंद्रयान 3 के बारे में लोगों को इसरो के वर्तमान अभी मिशन आपने चंद्रयान मिशन 3 के के द्वारा बारे में सुना May I इसरो invite के from अभी Anand आपने Technology लूनर Missions मिशंस का द्वारा सुना Mr. S. इसरो Sagar. चलते हैं के लूनर मिशंस का विवरण अब चलते हैं टुवर्ड्स चंद्रयान। Good evening, ladies and gentlemen. I'll quickly explain about Anand's space sector activities. Anand started in 1992 with a vision to indigenize systems for aerospace and defense applications. And we are 100% Indian owned and AS9100D certified. So Anand has been associated with ISRO for the last 3 decades in design, development, manufacture of systems for satellites, launch vehicles, and payload applications. We are also into geospatial services where we use satellite imagery for different applications like disaster management, urban planning, socio-economic surveys, etc. And Anand also is part of AIT of spacecraft and नमस्कार launch vehicle. इसरो के इस महाअभियान से जुड़ने के लिए नमस्कार आप सादर आमंत्रित इस महाअभियान से जुड़ने के लिए मैं आप सादर आमंत्रित अपने को होस्ट श्रीमती आरुषि सेडियो के साथ आप सभी को होस्ट श्रीमती आरुषि से जुड़े सभी दर्शकों आप सभी को हार्दिक और देश विदेश से जुड़े सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन 2000 स्वागत करता आज की शाम 23 अगस्त 2023 और सभी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के साथ इसरो के वैज्ञानिक मॉड्यूल और सभी चंद्रमा के वैज्ञानिकों के साथ लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा के सतह पर तैयार और उत्सुक ऐतिहासिक पलों को देखने के लिए इसरो के गौरवपूर्ण इतिहास में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है इसरो के गौरवपूर्ण इतिहास में और आज हम एक और अध्याय जुड़ने जा रहे बनेंगे और आज हम सब लोग आप ये सारे विजुअल्स अपने स्क्रीन पर इसरो के मिशन ऑपरेशन सारे विजुअल्स अपने स्क्रीन से देख रहे हैं इसरो के मिशन ऑपरेशन की बेंगलुरु में स्थित टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड जो कि बेंगलुरु में स्थित टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क इस ट्रैक के विजुअल्स आपको पावर डिसेंट के काउंटडाउन और उस पर विजुअल्स कर रहा है डिसेंट के काउंटडाउन और चंद्रमा के साउथ कर रहा है जिस पे चेकर लैंडर लैंडिंग आज चंद्रमा के साउथ पोल पे आपको ध्यान दिला और सॉफ्ट लैंडिंग इस समय हम लोग पावर डिसेंट शुरू होने से दिला दूं लगभग इस समय हम लोग पावर डिसेंट शुरू होने से जो दर्शक लगभग 22 मिनट थोड़ी देर से जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें आप थोड़ी देर से जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें आप ऑफिशियल वेबसाइट ऐतिहासिक पेज को ट्विटर इसरो के और यूट्यूब पे भी देख सकते हैं फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब पे भी देख सकते हैं Honorable dignitaries, delegates, scientists, honorable media personnel, delegates, and dear viewers, scientists, a very good evening to all of you. And dear viewers, we at ISRO a very good welcome you to all of the live coverage. We at India's prestigious welcome you to the live coverage of India's prestigious Chandrayaan 3 missions. These are the visuals on the from Mission Operation Complex. These are ISRO's telemetry tracking and command network is ISRO's situated in Namma Bengaluru, Karnataka, situated in Namma Bengaluru, and my colleague Dr. Padamdev Mishra are your hosts for the evening. Dr. Padamdev Mishra accompany you on your journey for the landing event and shall accompany you on the journey of the landing event. From today we shall be witnessing touchdown, the final phase of the today we shall be witnessing technologically challenging mission operations and most technologically challenging mission operations will be making a safe and soft landing the lander module on the surface will be making a safe and soft landing. These display on the surface of the moon show the countdown to the power descent these start display screens as well as the show path the countdown that will be followed by the lander module as well as the path that will be followed by the lander module from the commencement of power descent. 18 minutes away India from the commencement is at the brink of power descent. History
As we all India await is at the brink of breath creating to witness history, the as we landing all on await Moon's with south bated polar breath region. to witness the landing on Moon's south polar region. Space launch vehicle company, and we are on a mission to make launch space access more affordable, reliable, and on demand. So we are the first space company to launch a rocket into the space from the entire South Asia. And so far we have raised 66 million capital, and thanks to our investors who have trusted us into this endeavor, and winner of two prestigious national awards. And currently we are a team of more than 240 people. इसरो का पहला मून मिशन चंद्रयान 1 अक्टूबर 2008 में PSL worked with ISRO, and then we have V. Gnana Gandhi, V. Ishwaran, and Selvaraju sir. Like all of them are veterans of space industry. Previously they worked with ISRO, and later they joined us. धन्यवाद आरुषि। अगर मैं सही मायने में कहूँ तो धन्यवाद अंतरिक्ष का कोई भी मिशन हो और चाहे किसी भी देश के द्वारा संचालित किया जा रहा हो और चाहे किसी भी देश के द्वारा संचालित किया जा रहा हो, अनिश्चितता के बीच बहुत ही महीन अंतर होता है। अनिश्चितता के बीच से कि एक बहुत ही सफल हीन अंतर सफल होता है, जिससे कि एक लेकिन ना हम थके या असफल होता है, ना हम हारे, लेकिन ना हम पिछली कमियों को सुधारते हुए आज पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि सुधारते लैंडर मॉड्यूल आज पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि सतह पर लैंडर मॉड्यूल निश्चित तौर पे चंद्रमा के सतह पर सभी दर्शकों के जानकारी के लिए अब हम इसरो के सभी दर्शकों के जानकारी के लिए अब हम इसरो के प्रस्तुत करेंगे। अब तक के सभी लूनर मिशन जी हाँ संक्षिप्त विवरण। इसरो का पहला मून मिशन चंद्रयान 1 जी हाँ अक्टूबर 2008 का पहला मून राकेट चंद्रयान 1 सफलतापूर्वक अक्टूबर 2008 में PSLV रॉकेट के द्वारा चंद्रयान 1 ने चंद्रमा के सतह पर पानी की खोज चंद्रयान 1 ने चंद्रमा के सतह पर पानी की खोज करके पहले ही आजकल विश्व के तमाम अंतरिक्ष वैज्ञानिक कारण है कि और स्पेस एजेंसियां विश्व के तमाम अंतरिक्ष वैज्ञानिक और करीब से जानने से एजेंसियां दिख रही हैं। चंद्रमा को और करीब से जानने के लिए बात करें चंद्रयान 2 दिख रही हैं, जो इसरो का दूसरा अगर हम बात करें चंद्रयान 2 2019 जो इसरो का दूसरा मिशन ताकतवर रॉकेट जुलाई 2019 में द्वारा सफलतापूर्वक ताकतवर रॉकेट किया गया था LVM-3 द्वारा, और आज भी लगभग 4 साल बाद किया गया था। या चंद्रमा और आज भी लगभग 4 साल बाद ऑर्बिट में घूमते हुए या चंद्रमा के 100 किलोमीटर की सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हुए बहुत ही उत्तम क्वालिटी का डेटा प्रदान कर रहा है। 1 साल निर्धारित मिशन के प्रारंभ में, परंतु LVM-3 द्वारा 1 साल निर्धारित सटीक इंजेक्शन और मिशन मैनेजमेंट की वजह से बहुत ही सटीक इंजेक्शन काफी लंबे मैनेजमेंट की वजह से चंद्रयान 2 समय तक कार्यरत। चंद्रमा के लगभग सभी भागों का चंद्रयान 2 है। इसका चंद्रमा के लगभग सभी भागों का पेलोड ले चुका है। OH-4 का यानी कि ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा, OH-4 का सबसे ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा जो कि चंद्रमा के सतह का लगातार पिक्चर भेज रहा है, जो कि चंद्रमा के सतह का लगातार निवेदन भेज रहा है। वो आप लोगों मैं आरुषि वर्तमान मिशन चंद्रयान 3 के बारे में आप लोगों को इसरो के वर्तमान मिशन चंद्रयान 3 के बारे में बताएं। अभी आपने मिश्रा जी के द्वारा सुना इसरो के अब तक के लूनर मिशन जी के द्वारा सुना इसरो के अब तक के लूनर चंद्रयान का विवरण। द फॉलो अप मिशन ऑफ Chandrayaan towards Chandrayaan, which has been designed to accomplish our mission goals, which has been designed to objective of Chandrayaan 3 mission is the demonstration objective of Chandrayaan soft landing on the lunar surface. Of safe and soft landing is a critical aspect for ISRO's future interplanetary missions. In addition to this, the mission objectives also include demonstration of the mission objectives also include and conduction demonstration of scientific experiments on moon and conduction of in situ scientific on the shoulders of India's heaviest rocket LVM carried on the shoulders on the 14th of July. Heaviest rocket Chandrayaan 3 was placed in the 14th of July. Parking orbit Chandrayaan 3 was placed in the precise elliptic 36,500 kilometers. By 36,500 kilometers, following the incremental trajectory approach, in its mission plan of following the incremental trajectory approach, carried a total of 5 earthbound maneuvers, which took place on the 25th of July. Apogee raising maneuver, placed the spacecraft in an orbit of 250, placed the spacecraft in an orbit of 250 by 1,27,000 kilometers. The translunar injection was carried out, of 1st August, after which the translunar injection was carried out. The final leg of its long journey, the composite module of nearly 3,84,000 kilometers for its rendezvous with the moon. 3,84,000 kilometers. The TLI was a key step in the mission, enabling the TLI was a key step in the mission, gravitational pull, enabling the and travel to the moon to escape Earth's gravitational pull of 288
by 3,69,228 kilometers was achieved at the end of the trans-lunar kilometers was achieved at the end of the trans-lunar injection. ट्रांसलूनर इंजेक्शन किसी भी इंटरप्लेनेटरी मिशन के लिए बहुत ही आवश्यक, किसी भी इंटरप्लेनेटरी मिशन के लिए बहुत ही सफल मैन्यूअर के बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी से दूर निकल मैन्यूअर के बाद चंद्रयान के प्रभाव क्षेत्र से दूर निकलकर हाइपरबोलिक ट्रैजेक्टरी चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र में पहुंचाया गया। हाइपरबोलिक ट्रैजेक्टरी 5 अगस्त 2023 पहुंचाया गया। लूनर आर्बिट 5 अगस्त 2023 चंद्रयान 3 को 160 किलोमीटर के पेरीलून द्वारा चंद्रयान 1000 किलोमीटर 160 किलोमीटर के पेरीलून चंद्रमा के 18000 किलोमीटर के अपोलून के साथ चंद्रमा के इलिप्टिकल ऑर्बिट में एलओआई भी एक बहुत जटिल ऑपरेशन की तरह एलओआई भी इसमें हमें जटिल देना आवश्यक होता है कि इसमें हमें ध्यान देना आवश्यक होता है कि उसे घटाया जा सके। उपग्रह के वेगमान अन्यथा एक निश्चित चंद्रमा से घटाया जा सके बाहर निकल जाएगा। उपग्रह चंद्रमा के प्रभाव एलओआई से सफलता बाहर निकल जाएगा। परिचालन के बाद चंद्रयान की कक्षा को 4 बार परिचालन के बाद किया गया। चंद्रयान इस दौरान कक्षा को 4 बार और परिवर्तित किया गया। 160 किलोमीटर कर दिया ऊंचाई को घटाकर इस पूरी 160 में propulsion मॉड्यूल का लगभग 750 किलोग्राम में propulsion मॉड्यूल का लगभग 700 और चंद्रयान 3 के वेगमान को ईंधन का उपयोग हुआ 800 और चंद्रयान 3 के वेगमान कर दिया गया लगभग 850 लैंडर मॉड्यूल को कम कर लगभग 150 किलोमीटर लैंडर मॉड्यूल ऑर्बिट में लगभग करने के बाद 50 किलोमीटर के 17 अगस्त 2023 को करने के बाद propulsion मॉड्यूल से 17 अगस्त 2023 को पुनः लैंडर मॉडल के अलग कर दिया गया। 2 डुई बूस्ट पुनः लैंडर मॉडल द्वारा 150 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट द्वारा घटाकर 50 किलोमीटर के 130 सर्कुलर ऑर्बिट से घटाकर इलिप्टिकल ऑर्बिट में 130 किलोमीटर के इस दौरान ऑर्बिट में यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि 800 न्यूटन के चारों सुनिश्चित कर दिया गया कि पावर डिसेंट के समय किसी चारों थ्रॉटल सामना कर सके। पावर डिसेंट के लैंडर मॉडल चुनौती का सामना कर सके। 4 दिन तक चंद्रमा लैंडर परिक्रमा करता रहा ऑर्बिट में 4 दिन तक चंद्रमा की परिक्रमा करता रहा। पावर डिसेंट से पहले कार्यात्मक सभी सब वेरीफाई और वैलिडेट किया जा सके। पहले कार्यात्मक रूप से वेरीफाई इस दौरान चंद्रयान 2 और लैंडर मॉड्यूल की आपस में बातचीत चंद्रयान 2 और लैंडर मॉड्यूल की आपस में बातचीत भी हो चुकी है। तो लैंडर मॉड्यूल अपने अब तक की यात्रा की बात करें और तो लैंडर मॉड्यूल इस बार चंद्रमा का चक्कर लगा चुका है और लगभग 120 यात्रा में लगभग 55 लाख किलोमीटर की यात्रा भी और इस पूरी यात्रा में लगभग 55 लाख किलोमीटर की पूरे अभियान में यह भी सुनिश्चित किया गया कि तक के सारे ऑर्बिट अभियान में यह भी सुनिश्चित किया गया कि लैंडिंग सारे ऑर्बिट मैन्यूअर्स इस पावर डिसेंट की शुरुआत से ही लैंडर के ऑर्बिटल प्लेन में बना रहे। पावर डिसेंट की शुरुआत से ही लैंडर के ऑर्बिटल प्लेन में बना रहे। Make it further complicated. We have arrived at the crucial juncture wherein the orbit contains the desired landing site, wherein the orbit power contains the desired landing site. We are also happy to announce that live images from the Chandrayaan lander imager camera, live images from the Chandrayaan lander imager camera. The demonstration of soft landing on the moon's surface is the demonstration of soft landing due to the innumerable challenges and complexities involved. Due to the innumerable lander velocity has to be killed involved from nearly 6,048 kilometers per hour from without any aid from the thin and tenuous moon's without any aid from the lunar dust at the time of landing and the craters and lunar dust at the time of the moon's surface and the craters and further complicated scattered over the moon's surface make it further complicated Chandrayaan 3 design has been built after the new and improved Chandrayaan all the scenarios has been the lander module can encounter all the scenarios with several software improvements provision for full level redundancy several software improvements plethora of special tests for full level redundancy the integrated hot test of special integrated cold test and lander leg drop tests were carried out for the lander module and lander leg drop tests were carried out for the lander module provided great confidence in the performance tests of all the onboard great confidence propulsion system of all the onboard guidance control propulsion navigation algorithm and associated guidance the key findings and navigation algorithms have enabled to improve the overall system performance have enabled the largely unexplored south pole of the moon has been chosen as the intended landing site of the moon since there is a possibility as the intended landing site and other minerals there is a possibility vital resources for future other minerals which would be vital resources from continuing investigations pioneered by Chandrayaan 1 continuing investigations the Chandrayaan 3 mission will also provide invaluable data to the science community will also provide the world invaluable data let us give our viewers a glimpse around the configuration
configuration, let us give our viewers a glimpse on the configuration of Chandrayaan 3 mission. A service which is transformational, really providing a fiber and terrestrial-like experience with satellite. Lastly, I think SATCOM plays a dear role in mobility, defense, national security, disaster management, and these are not just jargons. We've been running it, and I think the entire चंद्रयान 3 का मिशन प्लान लगभग चंद्रयान 2 की तरह ही बनाया गया है। लगभग यह भी सुनिश्चित किया गया है कि बनाया गया है चंद्रयान 3 यहाँ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि से लेकर चंद्रयान चंद्रमा के निकट रॉकेट से अलग होने से लेकर के सारी चंद्रमा के निकट चंद्रयान 2 के स्थापित होने तक और सारी गतिविधियां कह सकते हैं कि यह प्लान पूरी तरह से सब हम यह कह सकते हैं कि यह प्लान पूरी तरह से मॉड्यूल के सेंसर रहा और propulsion सिस्टम को लैंडर इस तरह से मजबूत किया गया है और propulsion लैंडर पावर डिसेंट तरह से मजबूत किया गया है आपदा से बाहर लैंडर पावर डिसेंट के मुख्य उद्देश्य किसी भी आपदा से बाहर आकर के इस क्रम में लैंडर के मुख्य सेंसर्स कारा इस क्रम में लैंडर के मुख्य सेंसर एलडीवी कारा और एलएच लासा कार्यालय परीक्षण किया जा चुका है और एलएच डैक का कार्यालय जो कि पूर्णतः स्वदेशी तकनीकी से बनाया गया एलडीवी जो कि पूर्णतः स्वदेशी तकनीकी से बनाया गया लैंडर के वेलोसिटी को तीनों अक्षों में मुख्य कंप्यूट करना लैंडर के वेलोसिटी पावर डिसेंट के दौरान लैंडर के सटीक पोजीशन पावर और वेलोसिटी के दौरान ज्ञान होना लैंडर की सटीक पोजीशन और वेलोसिटी का ज्ञान लेजर इनर्शियल आवश्यक है एंड एक्सीलरोमीटर पैकेज यानी लेजर इनर्शियल कार्य को पावर डिसेंट एंड एक्सीलरोमीटर भी निभाएगा इस कार्य को पावर डिसेंट के दौरान ट्रैजेक्टरी जनरेशन निभाएगा जो कि चंद्रयान 3 मिशन के लिए बहुत ट्रैजेक्टरी जनरेशन जो कि चंद्रयान आरबी मिशन के लिए बहुत ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर आरबी मैन्यूवर के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है क्रम में मैं यह भी आपको बता दूं कि ऑर्बिट डिटरमिनेशन क्रम में जो कि मैं यह भी आपको बता दूं कि ऑर्बिट डिटरमिनेशन बहुत ही एक्यूरेटली बताता है और वेलोसिटी बहुत ही कठिन बहुत जटिल क्वांटिटी बताता है और एस्टिमेशन बहुत ही कठिन और जटिल यहाँ यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि चंद्रयान 2 का यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि 4C पेलोड चंद्रयान 2 का काफी ऊंचे स्तर का डैम वो 4C पेलोड जिसके फलस्वरूप काफी ऊंचे साइट की सीमा को बढ़ाकर जिसके 4x2.4 किलोमीटर सीमा को बढ़ाकर जो 4x2.4 किलोमीटर लैंडिंग कराने में काफी पावर डिसेंट के दौरान सॉफ्ट लैंडिंग कराने में काफी सहायक सिद्ध होगा। Apart from the sensors, Chandrayaan 3 is equipped with a suite of sophisticated payload instruments. Is equipped with a suite while Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 orbiter have provided while Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 orbiter have provided equally abundant remote sensing on-site localized measurements. Equally important ground are the on-site localized measurements. Lander and rover have payloads which are completely new. Lander and rover have payloads which are completely lunar surface and will perform the two spectroscopes on rover of lunar surface. APXs and LIBS. The two spectroscopes measure the surface elemental abundances at the landing location measure the surface elemental abundances at the landing location. The lander carries a seismometer ILSA that can sense impact events and lunar quakes. That can sense the thermal events and lunar quakes. Will measure the temperature profile and thermal conductivity will measure the temperature profile and thermal conductivity. The Rambha payload will carry out lunar ionosphere studies. The Rambha payload will carry out lunar ionosphere studies. While the laser retroreflector array shall be a passive location altimeter for future spacecraft. The propulsion module has not been left behind. And the propulsion experiment has not been left behind has been added and to it as a value addition. Shape payload has been added help in understanding the nature and characteristics of water-rich understanding the nature and characteristics in the future study of potentially habitable exoplanets. In the future study of potentially habitable exoplanets. We are minutes away from the start of powered descent. We are minutes away. The entire powered descent shall be carried out by the onboard autonomous landing sequencer shall be carried out or by the onboard autonomous series of instructions or preloaded to the lander module. A series of instructions. These instructions preloaded to the lander module executed. These data to be collected, the commands to be executed, and decisions to be made and executed and analyzed throughout the powered descent. Decisions to be made and executed autonomously throughout the powered descent. जी हाँ, अब हम पावर डिसेंट के बहुत ही करीब आ चुके हैं। जी हाँ, अब हम आपको बताते चलें कि पावर डिसेंट को कुल 4 चरणों में बांटा गया है। पावर डिसेंट सबसे पहले आता है 4 चरणों में बांटा गया है।
जिसमें लैंडर पहले आता है चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर से ऊंचाई को चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर से घटाकर इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग इस 11.5 मिनट पूरा करने में और इसका लगभग समानांतर 11.5 मिनट 1680 मीटर समानांतर घटाकर 1680 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 358 We मीटर have प्रति continuous सेकंड flow of lander telemetry data from ISRO's deep space network IDSN 32 located in Belalu, Bengaluru. IDSN 32 the data is being acquired real-time by station and is flown to the mission operation complex through our communication and is flown to the mission operation complex. We also have communication links from ESA and JPL-DSN stations. We also have support from ESA. There will be no ground intervention once the ALS takes charge. There will be no ground intervention. The preparation for today's event had started 48 hours before. The preparation for today's event had started and 48 hours parameters for the autonomous landing sequence were carried parameters for the autonomous landing sequence were carried out. The whole descent is divided into 4 phases. The rough braking phase, descent is divided into the 4 attitude phases. Hold phase, the rough braking phase, and the local navigation phase, or the terminal descent phase, and the local navigation phase, or the terminal descent phase. जी हाँ, एटीट्यूड होल्ड फेज जो कि पावर डिसेंट का दूसरा चरण है। एटीट्यूड होल्ड बहुत ही महत्वपूर्ण पावर डिसेंट का दूसरा चरण 10 सेकंड के बहुत ही स्मॉल ड्यूरेशन के दौरान इस लैंडर के 2 महत्वपूर्ण स्मॉल ड्यूरेशन के दौरान और लैंडर की 2 महत्वपूर्ण ऊंचाई की गणना कारा और लासा के पूरा लैंडर की ऊंचाई की लैंडर चंद्रमा के सतह से कुल 6.8 किलोमीटर लैंडर चंद्रमा के सतह से कुल 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। During the rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1,680 meters per second to 3,680 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking to 7.4 kilometers at the end of rough braking. Looking at the climate change and really the diversity of the country like India, where we need to really monitor the weather, real, agricultural output and all of that. Currently, we can see the scientists are analyzing the lander data. We can see the scientists are analyzing the lander data. जी हाँ, हम ये देख सकते हैं कि मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स हमें देख सकते हैं बैठे सभी वैज्ञानिक ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स जो भी डेटा बैठे सभी वैज्ञानिक वो जो भी डेटा डीप स्पेस देख रहे हैं आईडीएसएन 32 के द्वारा स्पेस नेट प्रोवाइड किया जा रहा है 32 और अगर हम बात करें प्रोवाइड किया जा रहा है तीसरे चरण का और अगर हम बात करें पावर डिसेंट के तीसरे चरण का लैंडिंग साइड से जस्ट होगा 800 मीटर में लैंडर पर लैंडिंग साइड होगा जस्ट 800 मीटर की ऊंचाई पर पूरा होने में वर्टिकली होगा 3 मिनट लगेंगे इस चरण को और इस चरण होने में होते ही 3 मिनट लगेंगे वेलोसिटी और इस लगभग पूरा होते ही शून्य हो जाएगा लैंडर की वेलोसिटी लगभग The scientists here at ISTRAC are glued to their systems, analyzing all sorts of complex data. To their systems, analyzing all sorts of complex data. We are very close to the powered descent. We are very close of the powered descent phase. The powered descent to the start of the powered descent phase. जी हाँ, अगर हम अब बात करें पावर डिसेंट जी हाँ, चौथे और अंतिम चरण अगर हम अब बात करें लोकल नेविगेशन चौथे और अंतिम टर्मिनल डिसेंट फेज जो कहा जाता है लोकल नेविगेशन इस दौरान या टर्मिनल के 2 इंजन बंद कर दिए जाएंगे इस दौरान और लैंडर के 2 इंजन बंद कर दिए जाएंगे और वेलोसिटी और लैंडर के सेंसरों द्वारा नेविगेशन को भेज और वेलोसिटी की गणना इस दौरान नेविगेशन लैंडर 150 मीटर की ऊंचाई को इस दौरान प्राप्त करने के बाद 150 मीटर की ऊंचाई को 131 सेकंड लगाएगा इस पड़ाव पे आने के बाद 131 लैंडर लगाएगा 22 सेकंड के लिए इस पड़ाव पे आने के बाद पुनः लैंडर 22 सेकंड के लिए हवरिंग करेगा About this facility, it's about 50,000 square feet in area and about 150 employees, of which about 35,000 square feet is in clean rooms, and this facility is capable of churning out about 100 satellites a year, and आप इस समय अपने स्क्रीन पे मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में इस समय बैक स्क्रीन पे मिशन ऑपरेशन सभी मान्यगणों को देख सकते हैं बैठे जो कि बहुत ही सभी मान्यगणों के देख सकते हैं टेलीमेट्री डेटा को उत्सुकता के साथ अभी हम लोग पावर डिसेंट देख रहे हैं अभी हम लोग कुछ ही पल दूर हैं शुरू होने से जस्ट कुछ ही पल दूर हैं about 3 weeks ago पावर डिसेंट शुरू होने में लगभग
पावर डिसेंट शुरू बचा है, लगभग हमको 30 सेकंड ही बचा है मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स हमको ये सारे डेटा मिशन ऑपरेशन के द्वारा जो कि लगातार लैंडर आईडीएसन 30 में बना हुआ है प्रदान लगातार लैंडर के कनेक्शन में बना हुआ है प्रदान कर रहा है। Dear viewers, the pivotal power descent has begun, and the lander module is propelling towards the moon's surface, and the lander along the intended trajectory. Towards the moon's surface along the intended trajectory. Upcoming missions. The first is Assista 60 degree. 60 degree because the satellite does not have to tilt 30 degrees either way. It has to जी हाँ, अब देख सकते हैं रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत हम अब देख सकते हैं रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत हो चुकी है। During this rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1,000. The lander velocity shall be brought down from 1,680 meters per second to 358 meters per second. From 30 kilometers, the altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of 690 seconds. All this in the duration of 690 seconds. The laser inertial reference and accelerometer package. Currently, the laser inertial reference and accelerometer package (LIRAP) is aiding in the navigation. आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जी हाँ, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं 191 किलोमीटर लैंडर हॉरिजॉन्टल दिशा में चल चुका है। 191 किलोमीटर हॉरिजॉन्टल दिशा में चल चुका है। वेलोसिटी लगभग 31 किलोमीटर अभी तक इसकी वेलोसिटी लगभग 31 किलोमीटर बनी हुई है। So I thank Team ISRO to have given me this opportunity to participate. The lander module has traveled a distance of approximately 228 kilometers of approximately 228 kilometers that will be traveled during this phase shall be nearly 713.5 kilometers shall be nearly 713.5 kilometers. जी हाँ, कुल 745 किलोमीटर के इस रफ ब्रेकिंग फेज में 745 किलोमीटर के इस हम लोग लगभग अपनी यात्रा 20% की हम लोग लगभग कर चुके हैं। अपनी यात्रा 20% कंप्लीट कर चुके हैं। Which is the rubidium based as well as the passive hydrogen and active hydrogen lasers. On the column 3 you have the space atomic clocks. पावर डिसेंट की यह शुरुआत हम कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक पावर डिसेंट और सदी हुई शुरुआत हम कह सकते हैं जिसमें लैंडर ही सटीक अपने बेगमान हुई है को अनुमानित समय लैंडर घटा रहा है अपने बेगमान को अनुमानित तरीके से घटा रहा है। The altitude of the lander module will reduce from 7.4 of the lander module to 6.8 kilometers. From 7.4 kilometers during the next phase, which is going to be during the next phase, which is going to be. We can currently see that the altitude of the lander module we can currently see that the altitude of the lander module is nearly 31 kilometers. अभी हम इस ग्राउंड ट्रेस को देखते हुए कह सकते हैं आरसीसी अभी रफ ब्रेकिंग ग्राउंड ट्रेस को देखते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत देख सकती हैं बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोजेक्टेड ग्राउंड ट्रेस ये देख सकती हैं उसी पे अपना लैंडर प्रोजेक्टेड ग्राउंड आगे चलते हुए उसी पे अपना लैंडर मॉड्यूल अभी तक आगे चलते हुए देखा जा सकता है कि लैंडर मॉड्यूल लगभग देखा जा सकता है 370 लैंडर मॉड्यूल 36 दिशा में चल चुका है 370 किलोमीटर 36 दिशा में चल चुका है। The mission operations team is analyzing the data. The mission operations team is analyzing the data. We can all see the seriousness and the concentration with all see the each and every parameter of the lander module is being analyzed. Each and every parameter of the lander module is being analyzed. The performance so far seems to be nominal. The performance so far seems to be nominal. चूंकि एलएस एक्टिवेट किया जा चुका है इसलिए ग्राउंड से चूंकि एलएस एक्टिवेट किया जा चुका है इस दौरान ग्राउंड से कोई कमांडिंग नहीं की जा रही है। इसरो के इस दौरान आपके स्क्रीन पे रियल टाइम में आ रहा है इसरो के डीप स्पेस मिशन में से रियल टाइम में थर्ड ऑर्डर गाइडेंस पॉलिनोमियल का प्रयोग हुआ है। सेकंड और थर्ड ऑर्डर की इनर्शियल गाइडेंस पॉलिनोमियल का प्रयोग हुआ है हमेशा सुनिश्चित इनर्शियल थ्रस्ट और एंगल के हमेशा सुनिश्चित करें। During the entire descent, there is no ground intervention. During the entire ALS has taken charge. No ground intervention. The preparation for today's event had started nearly 48 hours before. For today's event various pre-selections and uplinking of parameters, wherein various pre-selections we can see that the vertical velocity of we can see that the vertical has been velocity brought down of the lander module coming down has been brought down.
It is continuously coming down, and the ALS had already been initiated 1 hour before the scheduled time of the power descent started. 1 hour before the scheduled time of the power descent started. Engine electronics module. Following this, the throttleable engine and lander was oriented module. The favorable switched on, and lander was oriented जी to हाँ, the आप अपनी favorable स्क्रीन पे attitude. देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल आप अपनी शुरुआत पे देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल जिसकी शुरुआत में लगभग 1150 लगभग जो 1150 बहुत ही मैजेस्टिक शुरुआत कही जा सकती है, जो कि एक बहुत ही मैजेस्टिक शुरुआत कही जा सकती है इस रफ ब्रेकिंग फेज के लिए. And by this, I thank you everyone for giving me the opportunity to present to you all. Thank you very much. Have a यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूं कि आप अपने स्क्रीन यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूं कि आप लैंडर मॉड्यूल का आल्टीट्यूड धीरे धीरे अब कम होता हुआ लैंडर मॉड्यूल का जो कि धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिख रहा है और जो कि एल्टीट्यूड भी है तो जो कि 28.6 किलोमीटर करंट एल्टीट्यूड की है तो जो कि 28.6 किलोमीटर पर ये भी देख सकते हैं चंद्रयान 3 लैंडर इमेजर डिस्प्ले है. The lander imager is continuously giving the lander imager is continuously giving and that is also being taking photographs of the moon surface. Currently the horizontal velocity streamed here. Currently the horizontal velocity and the distance traveled has been brought 574 kilometers. The distance traveled is the current altitude 577 kilometers as can be the current altitude on the screen is 27 kilometers as can be seen on the screen. करीब अपने आधे सफर को पूरा करते हुए करीब ब्रेकिंग फेज में अपने आधे सफर को पूरा की तरफ बढ़ते हुए ब्रेकिंग अपनी ऊंचाई को घटा रहा है. आगे की तरफ अगर बात करें अपनी ऊंचाई की घटा रहा है चंद्रमा के सतह से करें लगभग 27 किलोमीटर से नीचे चंद्रमा के सतह से करीब लगभग 27 किलोमीटर से नीचे हो चुकी है. करीब 26.7 किलोमीटर के आसपास है. The next phase after the rough braking phase is the attitude hold phase. After the rough braking phase for a duration of nearly 10 seconds, which will the lander will be duration of nearly 10 such seconds. That both the altimeters will be oriented exactly towards such the moon that both the altimeters will be looking end of exactly towards attitude hold phase. Height measurement update to navigation system will be given from the laser and carb navigation system will be given. Currently we are in the middle of the rough braking phase. Currently we are in the middle of the rough braking phase. अगर हम ध्यान से देखें तो लगभग अगर 8 मिनट की यात्रा ध्यान से देखें तो लगभग लैंडर 8 मिनट की यात्रा के बाद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम करते हुए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को अभी लगातार कम कर 24 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त अभी की ऊंचाई के समय 24 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है. अब तक के आंकड़े को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लैंडिंग अब तक के आंकड़े को देखते हुए नामिनल कह सकते हैं कि यहाँ पर हम देख पूरी तरह से नामिनल है. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगातार हैं कम होती हुई दिख रही है. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगातार कम होती हुई दिख रही है. Mobile MOT are also a part of it, and some of the strategic applications with DRDO, we have supplied all the TR models. The altitude of lander from ground is currently 12 km. The altitude of lander is currently 22 km, which is again going currently 22 km, and that again going to be coming down, and that for the viewers who have joined now. We are in the viewers who have joined now power descent phase and we are in the rough braking phase which is the power descent phase of the power descent. We are in the rough braking phase. We have currently traveled a downrange of 697 we have currently traveled a downrange of 697 kilometers. The downrange that has to be traveled during this phase is 713.5 that has to be traveled during this phase is 713.5 kilometers. कि लैंडर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगभग 700 कि लैंडर की हॉरिजॉन्टल मीटर प्रति लगभग 700 लगभग 20 मीटर में कह सकते हैं कि 900 लगभग मीटर पर सेकंड हमें कह सकते वेलोसिटी को कम किया जा चुका है. मीटर पर सेकंड वेलोसिटी को कम किया जा चुका है. At the same time, we can see the altitude of the lander is just at the same time we can see the altitude of the lander is just 17 moon surface 17.8 which is going to be from the around 7.4 at the end of the going to be around 7.4 at the end of the rough braking phase. इस फेज के बाद हम जाएंगे टुवर्ड्स फेज के बाद हम जाएंगे टुवर्ड्स द attitude we will be expecting sensor update from the laser where we will be expecting sensor update from the laser and car band altimeters.
We can see the visualization of the lander module. We can see the visualization of the lander module surface. The current altitude is nearly 15.2 kilometers. The current altitude and the distance traveled is 754 kilometers. And the distance we can also see the image that the lander imager camera we can also see the image that the lander imager camera जी has हाँ, been इस रफ providing. ब्रेकिंग फेज के दौरान 800 न्यूटन के चारों थ्रोटल इंजन फेज के अपने दौरान कार्य को पूरी 800 तरह से न्यूटन के चारों अंजाम दे थ्रोटल रहे इंजन हैं अपने कार्य और को पूरी तरह लैंडर से के अंजाम दे रहे हैं को लगातार और कम कर रहे हैं। लैंडर के हॉरिजॉन्टल अब वेलोसिटी तक को लैंडर लगातार लगभग कम कर रहे हैं। अब तक लैंडर लगभग 75 से 80% की यात्रा को पूरा कर चुका है। 75 से 80% की यात्रा को पूरा कर चुका है। After the rough braking and the attitude hold phase, we shall be having the fine braking and the attitude hold phase. Continue we shall be having the fine braking phase, which will continue for nearly 3 minutes. The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer. The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer, and there is no intervention from ground. जी हाँ आरुषि, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं। जी हाँ आरुषि, अभी आप अपनी जो करंट आल्टीट्यूड है कि चंद्रमा के सतह से जो करंट आल्टीट्यूड है 10 किलोमीटर चंद्रमा के सतह से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास हम अपने जी हाँ हम अपने जी हाँ हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हाँ हमारे का उत्साहवर्धन करने के लिए नरेंद्र मोदी जी अफ्रीका के सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जोहानसबर्ग से जुड़ गए हैं। Along with this, we've also recently launched a beta version of Aurora. That's our highly intuitive AI-powered geospatial analysis platform. Yes, we are privileged to have with us Honorable Prime Minister of India, to have with Narendra Modi ji, Honorable Prime Minister of India, South Africa's Narendra Modi ji, to encourage us, has joined us from South Africa's Johannesburg to encourage us. And also allow even those with less technical knowledge to जी हाँ understand the image. आप ये देख सकते हैं एटीट्यूड होल्ड फेज भी आप ये देख सकते हैं आसानी से लैंडर फेज ने पार कर लिया है। आसानी से ब्रेकिंग लैंडर फेज ने पार कर लिया है, हो चुकी है और अब फाइन ब्रेकिंग हम ये देख सकते हैं शुरुआत हो चुकी है। लैंडर की ऊंचाई देख सकते हैं लगभग 5.6 किलोमीटर है ऊंचाई जो कि लगभग 5.6 किलोमीटर है लगभग जो 800 मीटर फेज के उपरांत लगभग 800 मीटर हो जाएगी। We can hear from the mission operations team, we can hear that from the sensors are performing mission operations team that the sensors we are currently in the midst of the fine braking phase, which is going to continue we are currently in the midst of the fine braking phase, which is going to continue for going to be reduced 3 minutes to nearly 800 meters going to be at the end of this phase to nearly 800 meters at the end of this phase. ने बताया कि लगभग 3 मिनट के उपरांत आरुषि जी ने बताया लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली लैंडर की हाइट और यहाँ पे 800 मीटर लैंडर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी लैंडर की हॉरिजॉन्टल रेंज भी लगभग वर्टिकल वेलोसिटी इवन डाउन रेंज भी लगभग शून्य होगा। We can see the visual of the lander module and we can see that the down range travel of the lander module 800